2, 3, 5 equals to it is just a minute. Okay, where is that now? Copy, copy. Yeah, see. Okay. Let's get started. My voice is coming, right? Video is there, voice coming, everything is cool, everything is fine. Ladies and gentlemen, welcome to the live stream of zbit.com. My name is Nimesh. Let me just inform my people over here. Just a second, just a second, just a second. Just one moment. I will text in the telegram. Right. Video is there, voice coming, everything is cool, everything is fine. Ladies and gentlemen, welcome to the live stream of zbit.com. My name is Nimesh. Let me just inform my people over here. Just a second, just a second, just a second. Just one moment. I will text in the telegram. Live stream.
dropped the text. Let's see. Cool. Hi sir, can I have some money? I am new. Um, we don't provide money. Okay, that is one thing which I cannot provide. I need some money to trade. What we can provide you, agar if you know Hindi, I can speak in Hindi better so that you can understand what I'm trying to say. हम यहाँ पे ऐसे चैरिटी में पैसा नहीं देते हैं. अगर आपको ट्रेड के लिए पैसा चाहिए तो हम उसके लिए आपको एक बोनस अमाउंट देते हैं जो आपको मिला होगा जब आप फर्स्ट टाइम एक हमारा ऐप डाउनलोड करते हो. तो आपको 20 USDT बोनस मिलता है ट्रेड लेने के लिए. आप उस 20 USDT के बोनस से आप ट्रेड ले सकते हो बड़ी आराम से. फिर उस ट्रेड के उस बोनस में जो भी आप ट्रेड लेते हो उसमें अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट आपका होता है. आप उससे ट्रेड भी ले सकते हो और आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. तो प्लीज यहाँ मैं ऐसे मतलब ऐसे चैरिटी में पैसे नहीं दे सकता. उसके अलावा मैंने जो आपको बताया कि हर एक यूजर को 20 USDT का बोनस मिलता है हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड लेने के लिए. ठीक है. इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसी हमारे पास दो ऑफर होते हैं. एक होता है कि अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम में पहला डिपॉजिट करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दो गिफ्ट है हमारे पास. यहाँ पे एक है न्यू यूजर गिफ्ट, ये चले जाएंगे जल्दी से. न्यू यूजर गिफ्ट एक डोज कॉइन फ्री में देते हैं. और दूसरा है कि एग्जिस्टिंग यूजर 20 USDT डिपॉजिट करोगे तो आपको 200 USDT फ्री मिलता है. समझ में आ गया कि अगर आप नए यूजर हो तो आपको एक डोज कॉइन फ्री में देते हैं. डोज कॉइन की वैल्यू इस समय में कुछ 0.1 के आसपास चल रही है. हो सकता है कई बहुत जल्दी उसका ट्रेंड आ जाए क्योंकि ये दुनिया का सबसे पॉपुलर मीम कॉइन है. ठीक है. अब इसके अलावा इसमें आपको क्या करना है, आपको पहला डिपॉजिट करना है. पहला डिपॉजिट कहाँ करना है? पहला डिपॉजिट आपको ये यहाँ पे करना है. ये आप देख रहे हो, ये पहला डिपॉजिट यहाँ पे. जैसे आप इस डिपॉजिट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको पहला डिपॉजिट करना है उस पे मिनिमम $3 का. आप इस पे से क्लिक करके फुल प्रोसीजर भी लिख सकते हो. यहाँ पे ये फियाट डिपॉजिट लिखा हुआ है, उसके बाद क्रिप्टो डिपॉजिट लिखा हुआ है. आपको जो करना है वो कर सकते हो. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वॉलेट है जिसमें ऑलरेडी यूएसडीटी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यूएस क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हो. एंड अगर आपके पास आपने ऑलरेडी फिएट डिपॉजिट आपके आपका क्रिप्टो करेंसी नहीं है, आपके पास कोई ये नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास यूएसडीटी नहीं है, तो आप फिएट डिपॉजिट पे क्लिक करो. यहाँ पे आप आईएनआर का अमाउंट जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल 300 400 500 1000 5000, ये आप अपने हिसाब से एक अमाउंट लिख सकते हो. एंड उसके हिसाब से कितना आपको मिलेगा. यहाँ पे अभी का रेट क्या चालू है, 1 USDT का 92 आईएनआर का चालू है. ठीक है. ये अभी का यहाँ का करंटली रेट चालू है. डिपॉजिट का ये है, विड्रॉल का 89 है. ठीक है. यहाँ पे आपको रेट भी दिख जाता है कि रेट किसके हिसाब से क्या चालू है. एंड ये रेट हम डिसाइड नहीं करते, ये स्टैंडर्ड रेट होता है जो एक एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही हम करते हैं. इसमें कोई हमारा एक्स्ट्रा का हम नहीं लगाते. ठीक है. जो एक्सचेंज रेट रहता है हम उसी एक्सचेंज रेट पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल कराते हैं. इसमें कोई हमारा मतलब एक्स्ट्रा कट या नहीं, ये सब चीजें नहीं रहती. ठीक है. जैसे ही आप इन पे क्लिक कर लोगे, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं क्लिक करके दिखाता हूँ. अभी मैं 500 लिख देता हूँ. 500 में मुझे कितना मिलता है, 500 में मुझे मिलता है 5.43 USDT. 500 डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे सिर्फ 5.43 USDT ही मिलता है. ठीक है. उसके बाद में मैं सिलेक्ट पेमेंट पे करूंगा. अब ये 500 मुझे किस तरीके से भेजना है, मैं पेटीएम से भेजूँ, मैं यूपीआई से भेजूँ. यहाँ पे दो यूपीआई है, यूपीआई 1 यूपीआई 2 यूपीआई 2. ओके, सारे यूपीआई है और एक फोन पे है. ये इन चीजें अगर आपको कौन से यूज करनी है आप वो उस एक प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो. एंड फिर क्लिक करके आप उसको भेज दो. एंड फिर आपके अकाउंट में कुछ हार्डली 15 to 20 मिनट्स में ये 5 USDT रिफ्लेक्ट कर जाएगा. आप चेक कर सकते हो कि मे बी ये हो सकता है फ्यूचर में डिपॉजिट हो या स्पॉट में डिपॉजिट हो. ये कहीं पे भी डिपॉजिट होता है, इसका कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आप 2 मिनट में नहीं, कुछ सेकंड्स के अंदर आप स्पॉट का पैसा फ्यूचर में और फ्यूचर का पैसा स्पॉट में आप डाल सकते हो बड़ी आराम से. ठीक है. तो इन चीजों की आप प्लीज टेंशन ना लो. एंड ये आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाता है जब भी आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हो, वापस जाने का क्लिक करते हो तो आपको एक दिखाता है कि गेट 200 ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट आर योर्स, फ्री ट्रेडिंग क्रेडिट. ये लेजिटली जो मैंने बोला कि आप अगर 20 USDT डिपॉजिट करते हो तो आपको $200, $200
फ्री में मिलता है, मतलब 10 गुना का प्रॉफिट। आप डिपॉजिट सिर्फ 20 कर रहे हो पर आपको मिल 200 रहा है। समझ में आ रही है बात? अब ये 200 कहाँ से आ रहा है? ये हम दे रहे हैं आपको पैसा। और ये पैसा दे भी क्यों रहे, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार ये तो मतलब स्कैम वाली चीजें हो गई, ये तो इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। नहीं, आप आइडिया नहीं समझ रहे इसके पीछे। हर एक चीज करने के पीछे कारण होता है, एंड इसका कारण है कि हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ये कमोडिटीज नहीं है, ये इंडाइसेस नहीं है, ये दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट है जिसका नाम क्रिप्टो मार्केट है। ठीक है? अब इस क्रिप्टो मार्केट में आप स्टॉक मार्केट के जैसा पैसा इन्वेस्ट मत करो। आप स्टॉक मार्केट से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी वो उतना ही छोटा 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 मिल रहा है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है उसका इस मार्केट के अंदर। ठीक है? तो 200 क्रेडिट देके हमारा बस एक आइडिया ऐसा है कि जब आप बड़ा पैसा लगाते हो मार्केट में तो आपको बड़ा पैसा मिलता है मार्केट से। आप स्टॉक मार्केट के जैसे, इंडाइसिस के जैसे, कमोडिटीज के जैसे पैसे इन्वेस्ट करना बंद करो। ये एक क्रिप्टो मार्केट है जो आपको भर भर के पैसा देगा। ठीक है? इस मार्केट में एटलीस्ट टू एटलीस्ट अगर आपको बिगनर लेवल भी होगा कि आपको नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल भी मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं समझता, आपको कुछ नहीं आता है, कोई आइडिया नहीं है, आप जीरो से आए हो फॉर एग्जाम्पल, समझ के चलते हैं। अगर फिर भी आप जीरो से आए हो तो भी आपको मिनिमम टू मिनिमम $10, $20, 30, 40 या $50 से आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू करनी चाहिए। सीखने के लिए भी इतना इन्वेस्टमेंट देना ही देना चाहिए। आप एक चीज नोटिस करो कि $10, $20, मैं समझता हूँ कि एक इंडियन को, सर डोज कॉइन दाई दिला दो। हाँ, मैं डोज कॉइन दिला सकता हूँ, पर मैंने जैसे बोला कि डोज कॉइन के लिए आपको यहाँ पे इस डिपॉजिट बटन पे क्लिक करके पहला डिपॉजिट करना है। ओके? अगर आप इस डिपॉजिट बटन पे क्लिक करके पहला डिपॉजिट करते हो, एंड मिनिमम कितना, $3, मतलब ₹300। देखो, मुझे ये चीजें तो मत ही बोलो कि यार मेरे पास 0 USDT है, मेरे पास ये है, मेरे पास, हर एक बंदे के पास ना कुछ पैसा होता है। ठीक है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि यार एकदम मतलब कि आपके पास पैसा नहीं है करके। ठीक है? आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसा कहाँ लगाना है। आपको पैसा वो उन चीजों में लगाना है जो आप रोज कर रहे हो, कहीं बाहर खा ले रहे हो, कहीं यहाँ पे घूम लिया, कभी वहां पे घूम लिया, दोस्तों को उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक तो आप वो कर लो, या फिर आपको बस कितना मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ ₹300 अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है $3। मिनिमम मैंने बोला $3 करोगे तो आपको मैं एक डोज कॉइन फ्री में दूंगा। ऐसा तो बिल्कुल है नहीं कि भाई बंदों के पास में ₹300 नहीं है करके। ठीक है? जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन सब लोगों के पास में कुछ ना कुछ छोटा अमाउंट रहता ही रहता है। आप ₹300 बस डिपॉजिट करना है आपको, एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है? अब आप डिसाइड करो कि आपको ये ₹300, अगर आप आज से भी अगर चालू करोगे ना, सिर्फ गिनना कि मैं कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो ये 2 या 3 दिन में आप ₹300 उड़ा देते हो। मोस्टली कोई कोई लोग तो ये आधे घंटे में उड़ा देते हैं। एक दो दिन बियर मत पियो, 2-3 दिन बाहर मत घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से एक तो पहले आपका डिपॉजिट का अमाउंट बनेगा, इस डिपॉजिट से आप ट्रेडिंग ले सकते हो। मैं रोज इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करवाता हूँ लोगों से। मेरा कल का प्रॉफिट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेरा कल का प्रॉफिट है। ठीक है? दिस इज माई यस्टरडेज प्रॉफिट, जिसमें ये मेरा कल का प्रॉफिट है। $168 निकाला है मैंने मार्केट से, रिसॉल्व यूएसडी में ट्रेड लेके। ये मेरा कल का ट्रेड है, मैं दिखाता भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बस नाम के लिए यहाँ पे लिख के रख दिया है, मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ। ठीक है? जस्ट वन मोमेंट, आई विल शो यू गाइस एज वेल। डॉलर निकाला है मैंने मार्केट से, रिसॉल्व यूएसडी में ट्रेड, रिसॉल्व, मैं दिखाता भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बस नाम के, ये मेरा कल का प्रॉफिट है, यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे होंगे। एक है 125.7 यूएसडी का और दूसरा है 42.49 यूएसडी का। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, मतलब एडिशन करते हो इन दोनों की, तो आपको यही प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पे, जो कि है 168.23 यूएसडी। ये मेरा कल का प्रॉफिट है। ओके?
तो मिलने के लिए आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको चाहिए ये चीज। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि वो आपको चीजें नहीं चाहिए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 300 रुपये कोई बहुत क्रेजी अमाउंट नहीं है कि आपके पास होगी नहीं। 300 रुपये बहुत नॉर्मल सी अमाउंट है। मिलने के लिए आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बस जो हम नहीं नहीं बोल के बहुत सी जगह पर उड़ा देते हैं बड़ी आराम से। इच्छा नहीं है कि वो आपको चीजें नहीं चाहिए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 300 रुपये कोई बहुत क्रेजी अमाउंट नहीं है। तो आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं, एक सेकंड में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, जो नहीं देखनी सब चीजें। ओके, तो आज थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में देख लेते हैं। आई हैव नो मनी। होता है भाई, पैसा सबके पास होता है, उनको बस निकालना नहीं है, उनको बस अच्छी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है। जहां से आपको ऐसा लगता है ना कि लाइक मैंने आई हैव सीन मोस्टली पीपल, वेलकम यूजर 333787, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन ओवर हियर। माय नेम इज यश, आई एम अ लाइव स्ट्रीम host over here. This is my yesterday's profit. If you want to earn same kind of profit, can you see a profit over here? $168.23 profit I have earned from the market yesterday. Okay, I'm not lying. You can see my PNL over here as well, and that too from Zbit only. Okay, I'm not using some different platform. I'm using Zbit.com itself. Okay, it's a world. It's like I'm not saying, I'm not gonna brag about it that it's a world's best and blah blah thing. But to be very fair, to be very blunt, honest with you all people, Zbit.com is actually the most beginner friendly crypto exchange platform at right now place. Like platform exchange like Binance, OKYX, and there are few more, SP 500, and I forgot few names. But compared to all those things, if you use Zbit, it is the most beginner friendly app you can ever see. The most beginner friendly app. Okay, why it is considered as the most beginner friendly app? It is considered as the most beginner friendly app because everything, see, crypto market is already a very confusing market, but it is not confusing. If you look in one perspective, if you don't have knowledge, anything might look confusing to you. If you have knowledge, then everything looks simpler to you. Same is happening for me. Like when I see Zbit, how I use it, like I have used different platforms. I have used Binance, I have used OKYX, I have used SPN 500 as well, and few different like that XNS, yeah, XNS I have already used. So all this, when I looked at those platforms, they are comparatively little difficult to operate for a person who is very new to the market. Like there are so many different options which person might get confused. We Zbit has offered you those mode as well. Like if you can see in our platform over here, if you come, you will see that there are two modes which we give you. Like if you go on future, if you click on this top dot over here, there are two options for you. What trade, what you want to use model. Like easy mode is basically everything will be most simplest for you. There is nothing, there won't be difficult thing which can make you confusing. Simple, you have your margin, your leverage amount, which you can change from USDT or the resolve one. You drag it over here, how much cost it will take, whatever, how many things you like let's say like 49%, my 49% will be 389. I can totally see over here as well how much money is getting invested as well. And plus there is simple option is buy slash long, sell slash short. This is very important. Buy, before it was just buy and sell, but it was very important for all of you people to make understand this is not actually buy or this is not actually sell. It is actually long and it is actually short. Okay, that means basically in the future trade, whenever you go for long, means that you're predicting that the market is going to go up. Short means that you're predicting the market can fall down. You are not buying and you are not selling any cryptocurrency in the market. Okay, in the future trade, yeah, in a spot trading you can sell, in a spot trading you can buy, you can do anything in the spot trading, but not in this. Okay, so these are very, like if you look at our platform, it is the most simplest one. Like everything which you can gain over here, first is the live stream which is happening right now.
Welcome user 154435. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part. If अगर आप एक नए यूजर हो तो प्लीज मेरे लाइव स्ट्रीम पे पहला डिपॉजिट करके आप एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो। ये जब आप पहला डिपॉजिट यहाँ पे करते हो ये आपके ही अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। मैं बस बोल रहा हूँ डिपॉजिट करना कहाँ से। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन है, एक डिपॉजिट यहाँ पे भी है और एक डिपॉजिट बैलेंस ऑप्शन के पास भी है। अगर आप इन दोनों ऑप्शन को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीम से डिपॉजिट करते हो तब जाके आपको क्या मिलता है, एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके अलावा ये मेरा कल का प्रॉफिट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक मेरा कल का प्रॉफिट है 25 यूएसडी एंड 42, दोनों को अगर प्लस करो एडिशन करो तो ये मेरा कल का प्रॉफिट बनता है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है 168.23 डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ है कल। और ये रोज इसी नंबर में होता है प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्रॉफिट चाहिए और आप रोज मेरे साथ ट्रेड लेना चाहते हो तो प्लीज ये मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ये ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे लिखा है, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं रोज मार्केट के अपडेट, बड़े न्यूज, छोटी न्यूज, जीबिट में कुछ नया हो रहा है या फिर अपनी जो ट्रेड सिग्नल्स है ये सब चीजें भी मैं इसी ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए एंड प्लीज जब भी मैं आपको कोई ट्रेड देता हूं तो उस टाइम पे अवेलेबल रहा करो टेलीग्राम पे, उसको एक पिन कर दो या फिर एक अलर्ट लगा दो कि ये ग्रुप का जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आपका फोन बच जाना चाहिए। जैसे ही बच जाएगा, आपको जब ट्रेड दिख रहा है कि मैं एक ट्रेड ले रहा हूं, मैंने वहां पे पोस्ट भी कर दिया है, उस समय में उस ट्रेड को ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन करो। मैं हर रोज यहाँ पे एक ट्रेड देता हूँ वेनेसडे एंड थर्सडे छोड़ के, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टियां होती है, ठीक है। मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे काम पे रहता हूँ और हर ये पांचों दिन मैं रोज यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। उस समय में उस ट्रेड को ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन करो। मैं हर रोज यहाँ पे एक ट्रेड देता हूँ वेनेसडे एंड थर्सडे छोड़ के, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टियां होती है, ठीक है। मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे मैं पांचों दिन यहाँ पे आपको ट्रेडिंग देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होगे, अगर मैं बीटीसी में चले जाता हूँ अभी फिलहाल में, बीटीसी के यहाँ पे मैंने आपको दो गिफ्ट है जो बीटीसी में आपको भी मिलते हैं। नो, बीटीसी में नहीं, मतलब मैंने बीटीसी में ड्रॉ करके रखा हुआ, इसे दिखा रहा हूँ। एक न्यू यूजर गिफ्ट है। अगर आप नए हो जीबिट में, इसके पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की, कभी डिपॉजिट नहीं किया, कभी ट्रेड नहीं लिया, कभी लाइव स्ट्रीम में भी नहीं आए और आज ये पहला दिन है आपका यहाँ पे कि आप लाइव स्ट्रीम में आ रहे हो, तो आपको क्या है कि एक न्यू यूजर गिफ्ट है जहां पे आपको एक डोज कॉइन फ्री में मिलता है। अब ये फ्री का डोज कॉइन क्या है, जब आप पहला डिपॉजिट करते हो मेरे लाइव स्ट्रीम के थ्रू, मतलब यहाँ पे आपको ये लाइव स्ट्रीम दिख रही है, ये लाइव स्ट्रीम का बटन है, यहाँ पे ये डिपॉजिट का बटन। जब आप इस डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करके पहला डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी यूएसडीटी है तो ये क्रिप्टो डिपॉजिट करो, अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं है तो ये फिएट डिपॉजिट करो। जैसे ही क्लिक कर देते हो यहाँ पे आईएनआर का नंबर है, आपको कितना पैसा, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 500 यहाँ पे लग देता हूँ। अब 500 में मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ पे अगर मैं 500 देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को गेट क्या मिल रहा है 5.43। वो पूरा हिसाब से नंबर भी बता देगा कि मुझे कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा। पेमेंट मेथड सिलेक्ट करो एंड फिर सीधा डिपॉजिट करो। ओके, ये इतना सिंपल सा है। अगर आप इस डिपॉजिट बटन पे क्लिक करके पहला डिपॉजिट 300 रुपए यानी $3 अगर आप डिपॉजिट करते हो तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम के थ्रू डिपॉजिट करते हो $3, मिनिमम कितना, $3 जो होता है आईएनआर के हिसाब से 300 रुपए। ओके, अगर आप आईएनआर के हिसाब से, मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ 300 रुपए लिखा, 300 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, 300 रुपए में 2 बियर की बोतल आ जाती है और उससे ज्यादा हम पी भी लेते हैं, ठीक है। तो 300 रुपए ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि यार 300 रुपए कहाँ से लेके आओ। मुझे पता है सब लोग हफ्ते हफ्ते में 500 1000 खर्च कर देते हैं। अगर उस एक्स्ट्रा खर्च को थोड़ा सा ना खर्च करके
अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है और फ्री में आपको क्रिप्टो करेंसी भी मिल सकती है। ठीक है, 300 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, 300 रुपए में कितना मिलता है, $3.26। ठीक है, जैसे ही आपको ये $3 है, इसका स्क्रीनशॉट लो, पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट लो, मेरे ग्रुप में भेजो। ठीक है, ग्रुप कहाँ पे है मेरा, मेरा ग्रुप ये, अगर आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हो, इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप लिख के आता है। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें स्क्रीनशॉट भेजो, मुझे यूआईडी दो, मैं आपके अकाउंट में 1 डोज कॉइन तभी के तभी फ्री में डाल दूंगा। समझ में आ रही है बात? क्या करना है, सिंपल सा पहला डिपॉजिट, लोगों का सिर्फ पहला डिपॉजिट। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा एक और गिफ्ट दिख रहा है नीचे में। अब ये है एग्जिस्टिंग यूजर के लिए, यहाँ पे दिख रहा है ये एक और गिफ्ट है, एग्जिस्टिंग यूजर का गिफ्ट। डिपॉजिट कितना करना है, $20। मिलेगा कितना, $200, 10 गुना ज्यादा। मतलब बेसिकली अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं आपको, आप मुझे ₹20 देते हो तो मैं आपको 200 का नोट देता हूं, ये वही बात है। ठीक है, अगर आप लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट के थ्रू अपने ही अकाउंट में $20 डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में, तो आपको $200 फ्री मिलता है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अब इसमें ये आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, एक सेकेंड, आप मुझे ₹20 देते हो तो मैं आपको 200 का नोट देता हूं, ये वही बात है। ठीक है, अगर आप लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट के थ्रू अपने ही अकाउंट में $20 डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में, तो 99.9 रुपए डाला है, मतलब पेड। ठीक है, अब इसमें ये कोई यहाँ पे सुमित है क्या, एनीबडी इन द चैट सेक्शन, किसी का नाम सुमित है मेरे चैट में, जो भी इतने लोग हैं अभी, उनमें से किसी का नाम सुमित है जिसने अभी एक पेमेंट किया है, 99.9 रुपए डाला है, मतलब पेड, और इसने अभी ही वैसे तो ज्वाइन किया है वैसे। कोई है चैट में सुमित है, सुमित प्लीज, कोई चैट में सुमित विश्वास, कोई है चैट में जिसका नाम सुमित विश्वास है, जिसने अभी जस्ट रिसेंटली ग्रुप ज्वाइन करके एक स्क्रीनशॉट भेजा है, पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। कोई है चैट में प्लीज, वो हाय हेलो कुछ कर दे सुमित। सुमित इफ यू आर इन द चैट, अगर आप चैट के अंदर हो तो प्लीज हाय हेलो कर दो, क्योंकि कंफ्यूजन है जो आपको हुई है और आपने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करके एक स्क्रीनशॉट भेजा है, पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। कोई है चैट में प्लीज, वो हाय हेलो कुछ कर दे सुमित। सुमित इफ यू आर इन द चैट, अगर आप चैट के अंदर हो तो प्लीज हाय हेलो कर दो, क्योंकि कंफ्यूजन है जो आपको हुई है और आपने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, सुमित है कोई चैट में, सुमित जिसने अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन करके, अभी मतलब जस्ट अभी उसने ज्वाइन करके अभी ही पेमेंट डाली है। कोई है चैट के अंदर या फिर वो चैट में नहीं है? निखिल कुमार, सुमित है कोई चैट में, सुमित जिसने अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन करके, अभी मतलब जस्ट अभी उसने ज्वाइन करके अभी ही पेमेंट डाली है। कोई है चैट के अंदर या फिर वो चैट में नहीं है? भाई मैं सुमित हूँ, हेलो। हाँ भाई सुमित, सुमित आपने कहाँ पे डिपॉजिट किया है ये आपने जो डिपॉजिट किया है 99.99, मतलब $100 के आसपास जो डिपॉजिट किया है, वो कहाँ डिपॉजिट किया है? भाई मैं सुमित हूँ, हेलो। हाँ भाई सुमित, एंड मैं, एंड प्लीज आपका जो भी यूआईडी नंबर है, एक सबका एक हर लोगों का अपना अपना एक यूआईडी नंबर होता है, अगर आप जानते होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अगर आप इसे कैंसिल करते हो, ये प्रोफाइल में जाते हो, ये यहाँ पे ये प्रोफाइल दिख रही है, ये प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका एक यूआईडी नंबर रहता है, UID 102, ये मेरा यूआईडी है। डिपॉजिट भाई यहाँ पर ऑटो पे हो गया, डिपॉजिट भाई यहाँ पर ऑटो पे हो गया, ऑटो पे हो गया यानी
मैं समझा नहीं ऑटो पे। और ये मतलब स्क्रीनशॉट में कोई ये निखिल कुमार को भेजा है आपने वैसे तो पैसे। स्क्रीनशॉट में यहाँ पे टू निखिल कुमार लिख के आया है, जिसका मतलब नंबर एंड ऑल सब कुछ नीचे है यहाँ पे। तो आप पहले तो मुझे यूआईडी भेजो अपना, क्योंकि मुझे यूआईडी से वो कंफर्म करना है कि आपके यहाँ पे मतलब आपके अकाउंट से ही पैसा हुआ है कि नहीं। ये यूआईडी भेजो भाई, मेरा यूआईडी है 1030189। ठीक है। ठीक है, वन सेकेंड, एक सेकेंड। आपने डिपॉजिट बटन पे क्लिक किया था वैसे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं चेक करना चाहता हूँ वैसे। अभी ही तो किया है 1030। नो ब्रो। 1879, 1879, 1879। भाई यूपीआई आया था, वही यूपीआई आया था। ओके ओके ओके, नहीं नहीं, वो यूपीआई की कोई बात नहीं है। बट आपने ये जो डिपॉजिट किया है, पहला डिपॉजिट, मैं एक चीज मैंने जो बात बोली थी कि अगर आप 300 करते हो तो आपको डोज कॉइन मिलता है, ठीक है। आपने सिर्फ 100 रुपए किए हैं, तो आपको कुछ एक या 1.1.3 1.2 कुछ तो यूएसडी मिला होगा, ठीक है। आपको उसके लिए मैं कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा गिफ्ट का जो ये है मतलब कंडीशन यही थी कि ये नया यूजर का जो गिफ्ट होता है वो एक डोज कॉइन उसे $3 डिपॉजिट करने पे मिलता है। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपका पेमेंट एंड ऑल, आपने जो किया है मैं वो समझ गया। बट मैं वही कंफ्यूजन जो मैं बोल रहा था आपको कि पेमेंट तो मैं कंफर्म करवा लूंगा यहाँ से कि सही में आपके आईडी के थ्रू आया है कि नहीं आया है, क्योंकि उसे अभी आपने जस्ट किया है तो वो मेरे बैकएंड में अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ 15-20 मिनट में जैसी वो वेरीफाई हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका ये पहला डिपॉजिट है, आपने डिपॉजिट कर दिया है। नहीं मिला अभी तक भाई। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा 15 से 20 मिनट लगता है उसे। वो क्या होता है कि ये कन्वर्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से मैं आईएनआर ले रहा हूँ एंड वहां से मैं यूएसडी दे रहा हूँ। तो ये करेंसी एक्सचेंज एंड ये सब चीजों में वेरीफाई करना, अकाउंट वेरीफाई करना, पेमेंट वेरीफाई करना, आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट, उधर का ट्रांजैक्शन अमाउंट, आपका ट्रांजैक्शन आईडी, उधर का ट्रांजैक्शन आईडी, ये सेम है, ये सब चीजें भाई मॉर्निंग पर किए थे भाई, मॉर्निंग में किए थे, मॉर्निंग में किए थे आपने। आपने यूआईडी नंबर बराबर बताया मुझे। एक सेकंड, 1030 क्या था आपका यूआईडी? 1030181010301879। हाँ यहाँ पे अभी तक वो बैकएंड में आया नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, ये आपका जो केस है कि आपने जो भी डिपॉजिट किया है, मैं आपका मेरे को टेलीग्राम पे यूआईडी में भेज देना पर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार यूआईडी कॉपी पेस्ट करके वहां पे भेज दो। मैं आगे कस्टमर सर्विस में इसकी पूछ करता हूँ। आपने सुबह कब किया था डिपॉजिट? एक टाइमिंग बता देना मुझे, मैं अभी कस्टमर सर्विस में आपसे आपकी बात करता हूँ। कहाँ गया जीवित ग्रुप? यूजर वन, एक मुझे एक टाइमिंग बता दो भाई। मॉर्निंग पर किया था, अभी तक नहीं मिला। हाँ मैं, आप मेरे को बस एक बार टेलीग्राम पे वो यूआईडी भेज दो, उसके साथ साथ ही यूजर यूआईडी 10301879।
103087 deposit, fiat deposit. मैं अपनी कस्टमर सर्विस की यहाँ पे आपकी मैं बात कर रहा हूँ। यूजर यू आई डी 10301879, fiat डिपॉजिट 99.99 rupees, yet didn't receive USDT कस्टमर सर्विस की यहाँ पे आपकी मैं बात कर रहा हूँ। यूजर यू आई डी टिल नाउ 10301879, fiat deposit 99.99 rupees, yet didn't receive USDT। मैंने आगे उनको बता दिया है कि आपका ऐसा ऐसा इशू है। वो जैसी कुछ रिप्लाई देते हैं मैं आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई कर दूंगा। लिखा है ओके, मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं दिलवा दूंगा, उसका ये नहीं है। मैं जैसे ही बोला ना कि थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी वेरीफाई वगैरह कराने में, क्योंकि INR टू USDT कन्वर्ट करते हो तो थोड़ा सा ध्यान से वेरीफाई करना पड़ता है। मैं किसको टैग करूँ इसमें? मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं दिलवा दूंगा, उसका ये नहीं है। मैं जैसे ही बोला ना कि थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी वेरीफाई वगैरह कराने में, क्योंकि INR टू USDT कन्वर्ट करते हो तो थोड़ा सा ध्यान से वेरीफाई करना पड़ता है। मैं किसको टैग करूँ इसमें? किससे टैग करूँ? जी जी कृष्ण भाई करते तो किससे टैग करूँ? जी ओके, उन्होंने थम्स अप कर दिया है आपके इसमें, वो चेक करेंगे, जैसे ही चेक करके कुछ एक रिस्पांस वो आप ग्रुप में बोल देंगे, मैं आपको एक तो टेलीग्राम में भेज दूंगा वो रिस्पांस, या फिर आप लाइव स्ट्रीम में बने रहो, मैं आपको लाइव स्ट्रीम में भी बता दूंगा। ठीक है, उन्होंने थम्स अप कर दिया आपके अकाउंट में, वो चेक करेंगे अभी कि मतलब कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जो भी एक रिस्पॉन्स होगा वो मुझे ग्रुप में बताएंगे। अगर आप उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम में रहोगे तो मैं यहीं कहीं आपको बता दूंगा, अगर आप उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम में नहीं हो तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन मत लो, आपको पैसा आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, ओके, तो डी जो लिस्मी, डी जोइल लिस्मी, दैट्स द नेम, इंडोनेशियन नाम। डी जोइल लिस्मी इज मी, द डी जोइल इज मी, ओके, in that way, okay. Welcome, D Joey. Welcome on the live stream. Thank you so much for coming down. If you are a new user, do not forget to get one Dogecoin completely free of cost from me. Okay. For that, what you need to do is simply you need to deposit one Dogecoin. Simply you need to deposit minimum $3 in the live stream. Okay. From the live stream, actually, it's not like live stream is taking the money. It will deposit in your account only, but it will go through live stream. Basically, can you see a deposit button over here? If you click on this deposit button, deposit minimum $3 and I will give you one Dogecoin completely for free of cost. Okay, cool, thank you. Okay, let's just talk about a little overview कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। थोड़ा सा मार्केट बहुत 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 हल्का सा मार्केट उठा है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा 0.3% उठा है बस मार्केट।
कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं उठा है, सिर्फ 0.3% बिटकॉइन उठा है, 0.87% इथेरियम उठा है एंड 0.13 बीएनबी सोलाना अभी भी नीचे है। एक सेकेंड, वो बोल रहे हाँ 0.3% कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं उठा है, पेमेंट सिस्टम मेड ऑर्डर ओके ओके ओके, आई हैव पेमेंट स्क्रीनशॉट, पेमेंट स्क्रीनशॉट मांग रहे, भेज रहा हूँ मैं, मेरे पास है ऑलरेडी। ओके ओके ओके, आई हैव पेमेंट स्क्रीनशॉट, पेमेंट स्क्रीनशॉट मांग रहे, भेज रहा हूँ मैं, मेरे पास है ऑलरेडी। सबकी इन प्रोसेस ही है अभी भी, 1.08, एवरीबडी इज इन द प्रोसेस। मतलब बहुत से आप, मतलब आपके साथ साथ भी बहुत से लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है, तो उन सब की अभी मुझे दिख रहा है कि इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस ही है। आपका मैं एस्केलेट करके आपको जल्दी करवा दूंगा। ये फायदा होता है लाइव स्ट्रीम पे आने का, ठीक है, लाइव स्ट्रीम पे आपको सारी चीजें थोड़ा जितने हो सके उतने जल्दी में मैं करवा के देता हूँ। तो अभी के हिसाब से जैसा मैं बोल रहा था कि मार्केट, वेलकम यूजर 279448, एज यू आर फ्रॉम नाइजीरिया, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर ऑल ऑफ यू पीपल बिकॉज इंटरनेशनल पीपल भी है, तो मैं हिंदी थोड़ा कम यूज करूंगा अभी क्योंकि इंटरनेशनल लोग आ चुके हैं, ठीक है। सो एज वी वर लुकिंग एट द ओवरऑल मार्केट एट राइट नाउ, what we are seeing is like Bitcoin, Ethereum, and BNB and XRP. These are 3-4 coins which is up a little, not by a very huge percentage, just by 0.3 percentage. Okay. Now understand this one thing, at a right now place, after the Davos meeting, Davos, if you don't understand what do you mean by Davos, yeah, thanks, yeah, you are welcome. So if you don't understand the Davos meeting, Davos is basically a world economic forum. Okay, this world economic forum is okay, so it's a world economic forum in which what happens is the big leaders, big CEOs, big financial ministers, big finance firms, and every of those big people, they come together and talk about like what should we do about growing the economy, what are the steps we should be taking. And in that thing, the major, they talked about AI, they talked about cryptocurrency, they talked about the geopolitical tension happening also for between USA and the Greenland. Okay, in that thing, what should we do about growing the economy, what are the steps we should be taking. And in that thing, the major, they talk about AI. You're welcome, you're welcome, welcome, welcome. So welcome user 280443, welcome on the live stream. If you are a new user, make sure to do the first deposit from the live stream option. This is the first deposit button on the live stream option. Click on that, make a deposit, and get one Dogecoin from my side. Okay. So as we were talking about that, in that meeting, they talked about cryptocurrency, they talked about AI, they talked about the geopolitical news between USA and the Greenland. Okay. Mainly, let's talk about crypto because rest we don't care about. For the cryptocurrency, they said new regulations will be imposed very soon, which are being discussed in the Congress House. Okay, so basically, United States has a Congress House in which they discuss everything like what should be done, what should be not be done, and every of those things. Okay, so in that he mentioned, Trump has mentioned that Congress House is debating about a lot of new laws which are gonna impose in the soon in the cryptocurrency, laws for the investors, laws for the consumers, and laws for the stable coins, other cryptocurrencies, infrastructure coins, different coins. There will be a complete law. Understand this one point, whenever a law will be imposed, there will be a legal stamp on the cryptocurrency. This legal stamp on the cryptocurrency will be treated as what? This legal stamp in the cryptocurrency will be treated as like cryptocurrency are now a legitimate asset to trade on. Not just this, but bigger CEOs like Larry Finch, which is a BlackRock CEO, the one of the biggest investors, he has mentioned this one thing, that right now we should stop using Bitcoin as a experiment. Like till right now point, it was considered as a trial period.
ठीक है, एक ट्रायल पीरियड के जैसा ट्रेड किया जा रहा था क्रिप्टो करेंसी को अभी तक। ब्लैक रॉक सीईओ ने एक चीज बोली, ब्लैक रॉक सीईओ इस दुनिया का सबसे रईस फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है, इस दुनिया का सबसे रईस। उसके पास ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट वो हमेशा करता है, उसके पास उतने पैसे वो हैंडल करता है। ठीक है, अब उसने एक चीज बोली कि हमें क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट गेटवे एंड बाकी के जो बड़े बड़े यूज केसेस है उसके लिए 100% यूज करना चालू करना चाहिए। अभी तक हम बस छोटा परसेंट यूज कर रहे थे क्योंकि ट्रायल पीरियड था, एक नया क्रिप्टो करेंसी बहुत मतलब, फिर भी अगर हो गए नहीं नहीं बोल के 15 साल हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी। बट बट 15 साल एक बहुत बड़ी टाइमलाइन नहीं है अगर हम एक एरा को देखते हैं तो। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसने बोला कि 15 साल में एक ट्रायल पीरियड थे कि मतलब क्रिप्टो करेंसी सही में यूजफुल है, सही में फ्यूचर के लिए अच्छा है, कि हम इससे कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये सब चीजें के लिए ट्रायल पीरियड था। अब उसने ये चीज बोली है कि क्रिप्टो करेंसी का भी ट्रायल पीरियड के जैसा यूज करना बंद कर देना चाहिए एंड इसे सही में लेजिटिमेट 100% यूज करना चालू करना चाहिए। जिससे क्या होगा, उससे एक चीज होगी कि अभी सारे इन्वेस्टर जो लोग हैं वो सब के सब क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, राइट। एंड इसी से रिलेटेड मैंने आज एक टॉपिक बनाया है। कल एक मैंने टॉपिक पे बात किया था कि सारे जो भी इंस्टीट्यूशनल पीपल है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट पे जरूर क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करेंगे। अब वो कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे ये हमें जानना है ऑब्वियसली। तो उसके लिए मैंने आज एक टॉपिक सजेस्ट किया है जो है स्टेबल कॉइन, मतलब कि इस दुनिया में कितने क्रिप्टो करेंसीज है। कुछ स्टेबल कॉइन्स है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ यूटिलिटी है, कुछ पेमेंट गेटवेज है। ये सारे डिफरेंट कॉइन्स है जिनके बारे में मैं आज मैं बात करने वाला हूँ। एंड ये कॉइन मैं सिर्फ उन्हीं कॉइन के बारे में, मतलब पहले तो सारे कॉइन बताऊंगा कौन से कॉइन है इस दुनिया में, कहाँ कहाँ यूज की जाते हैं, उनका यूज केसेस क्या है। उसके अलावा इनमें से ऐसे कौन से कॉइन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में इंस्टीट्यूशन के पीपल इन्वेस्ट करते हैं। ओके, इफ आई टेल यू इन इंग्लिश व्हाट आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट इज दैट today is my topic because yesterday I talked about like a lot of institutional investor, they are right now going for the investment, maybe not right now, once the like all the laws are getting implied for the cryptocurrencies, like we talked about, like a congress house is having a lot of debate regarding the laws of the cryptocurrency. Once every of those law one by one get implemented in the real world, a lot of people will have a growing trust toward the cryptocurrency, which in institutional people already have. Okay, it just we don't have the growth, that's why it's for us that law is getting passed. Okay, the institutional people, they've already major ones have accepted cryptocurrency as a new payment getaway, as a new useful tool for a future, which is helping them a lot in lot of cases. Okay, for that thing he also mentioned that if institutional people, they are not even I'm talking about, okay, he said that institutional people are not even investing 2 to 5% of the market. If they even invest 2 to 5% of the market, the whole market will get pumped. So can you just understand this one thing, like can you understand in a serious way, like till 15 years, 15 years it has been passed, 15 to 16 years it has been passed for the cryptocurrency. In this 15 to 16 years till now point, cryptocurrency value, the Bitcoin value is what? 89K. It's a trial period value. Just imagine the real value of the Bitcoin, which will come very, very soon. Okay, because a trial period, in the trial period, like बोलते हैं ना कि एक ट्रायल बॉल, एक ट्रायल बॉल में अगर सिक्स मार दे तो उसे कोई गिनते नहीं है, राइट, कि अगर ट्रायल बॉल में भी क्रिप्टो करेंसी सिक्स मार रहा है, तुम सोचो बस कि रियल बॉल जब पड़ेगा तो वो कितना मारेगा, राइट। यही चीज मैं बता रहा हूं कि भाई ट्रायल पीरियड में 89K पे मार्केट आ चुका है, 89K में ट्रायल पीरियड पे। जस्ट इमेजिन करो कि जब असली में इन्वेस्टर लोग बड़ा बड़ा पैसा, अभी वो छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, असली में जब वो बड़ा बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये 89 कहां जाके रुकेगा, 150 पे, 180 पे, 200 पे, कहां जाके रुकेगा। एंड मैं आज उसी उसी जो मेरा लास्ट का कल का जो टॉपिक मैंने बताया था कि बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब यही लोग
कहाँ कर रहे हैं. That's exactly what I'm talking about today. कि like where are these people gonna invest? Institutional people said that they are gonna invest big in a big amount from now onwards because cryptocurrency is been accepted worldwide and it can make a global transfer cheaper, faster, and secure. Okay, now which are the specific coins? Because there are so many cryptocurrencies. Out of those cryptocurrency, which are the major ones which institutional people invest on? That's why in my today's topic I'm going to explain you types of cryptocurrency. How many types are there? Stable, utility, infrastructure, layer 1, layer 2, payment gateway, all kind of cryptocurrency I'm going to explain to you all people. And in that, which are those coins which only institutional people are looking to invest, I'm going to explain you those coins as well. Okay, first we'll talk about types of cryptocurrency, use cases of example of those. Secondly, we'll talk about which coins are institutional people investing. Got it? Simple. Okay, let's start with it. We'll discuss about the crypto market overview later. Let's just start with our this thing. Like how many types of coins are there? Okay. First of all, understand that cryptocurrency, all cryptocurrency, the all, like all the types which I'm going to explain you right now, every of those cryptocurrency is what? Every of those cryptocurrency is a digital coin. Okay, every of those currency is a digital coin. None of those currency are physical coin. Every of the cryptocurrency works on blockchain. I hope you all people understand blockchain. What do you mean by blockchain and everything? Okay, digital coin. Okay, every of those currency is a digital coin. None of those currency are physical coin. Okay, so first thing, understanding an institutional people's investors. Okay, what we do is, according to them, they invest millions and billions of dollar. Okay, sorry, they invest millions and billions of dollars in the market. Okay, they don't invest their pocket money like a very small amount of money, like $10,000, $20,000, $50,000. This is a small money for those people. They invest in bigger, millions, billions, and trillions of amount. They invest in the market. तो सक्सेस हो गया है नहीं आपका नहीं है millions and billions of amount they invest in the market. They do not look for a hype. Hype क्या होती है? What is hype? Hype is basically like right now a coin is trending a lot and that's hyping a lot. Investor people don't go behind the hype. You have to understand it. Investor people go behind stability, a coin which is stable, a coin which won't be changed with the trend. Like right now it is trendy. Like for example, take example of meme coins. Meme coins are fully trend based coins. If it has a trend, then the coin is having a very good value. Like for example, let's talk about Trump. In the starting period of a time, Trump coin was very good. It was going beyond, like it touched 47 $40 something. After the hype was gone, it came back again to 14 to $13. It went with the hype and it came down when the trend was over. Those kind of coins investor doesn't trade on. Okay, so let's start with first types of coin. How many types of coin we are looking at? Okay, first type of coin which I'm explaining you is infrastructure coin. What is it? Infrastructure coin. What does an infrastructure coin means? What do they do? Everything, let's talk about it. Types of coin, how many types of coin we are looking at? Okay, first type of coin which I'm explaining you is infrastructure coin. What is it? Infrastructure coin. What does an infrastructure coin means? What do they do? Everything, let's talk about it.
Okay. So let's talk about first infrastructure coin. Okay. What are infrastructure coin? What do they mean? How, why? Okay. My chat is stuck. How? Automatically. Okay. So let's talk about first infrastructure coin. Okay. What are infrastructure coin? What do they mean? So we'll discuss each and every of those things. First, let's talk about infrastructure structure. Infrastructure coins. I am talking about types of coins. How many types of coins are there? Which are those coins which institutional people are interested into invest? Because the institutional people's investment is the one which we want. Okay. First is infrastructure coin. It's a layer one basically. Layer one is like the first one which is came. Like for example, if you see, when you make a building, the base is basically your infrastructure coin. The base is layer one, which is your Bitcoin, Ethereum, Solana, uh, Avalanche, and Cardano. Okay, these are the five examples of the infrastructure coins. Okay, these are the top five. Okay, this is basically based on the layer one blockchain, which is the strong base pillars of the whole cryptocurrency. Just imagine this one thing, that from this base only rest of the coins have came out. Okay, from Bitcoin, from Ethereum, from Solana, from Avalanche, from Cardano, all this other cryptocurrency has came out of this only. Okay, so the base, the mothers is motherboard, basically consider it as a mother is Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, and Cardano. Okay, these are the one. Infrastructure coins are a base layer of the crypto, a foundation of the blockchain ecosystem. Everything else, D5, NFT games, NFT, those non-tangible things, meme coins, every of other things are built on this network. They secure transaction, maintain the network, and hold long-term value, not a short-term value. Okay. Welcome user 632679. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part. Thank you so much for coming down over here. Welcome. As we were discussing, like types of cryptocurrency and which are those cryptocurrency which institutional investor invest. First, I'm talking about infrastructure coins. Infrastructure coins are basically what? Like for example, this is your building, and building has a base. The when you put a lot of cement and everything and you make the pillars. Okay. Now that is basically the base of the whole building. Now the base of every cryptocurrency out there is the layer one blockchain, on which are the coins? We have Bitcoin, we have Ethereum, we have Cardano, we have Avalanche, and we have Solana. There are more others as well, but these are top five examples of the layer one blockchain. Okay. Now in that one thing, as you discuss, what is other things like DeFi coins, your NFT, the games, everything's are based on this blockchain only. Okay. Now understand this one thing. How many exist? Major 50 to 70 major coins are there in the layer one. 50 to 70. Okay. First person to came was Bitcoin. Second to came was Ethereum, and then they both had some XYZ thing, and due to which a lot of things came out. Like basically, Solana came out of Ethereum. So many other things came out of other stuffs as well. Okay, so there are major 50 to 70 major infrastructure coin, in which top 5 are what? Solana, Avalanche, Cardano, Ethereum, and Bitcoin. Top 5. Okay, now why does an institutional people invest in such coins? Why are they investing in such coins? Okay, let's talk about it. Okay, first, long term security. A coin is having a long term security. This is not meant for a short term like meme coins. They are just for trend based. And there are some other coins as well which is doesn't have a long term value. It has a very short term value created for some very small things. This layer one blockchain has a long term value because it is working, like it is basically the base. If the base doesn't exist, rest of the cryptocurrency will not exist. So basically this is what? A long term value.
The building above building can change millions of times. That doesn't matter. The base will remain the same. Okay. Store of value and infrastructure. Bitcoin is considered as a digital gold. Ethereum powers the decentralized finances and smart contract. For example, basically, in the layer one blockchain, Bitcoin is what we consider as a gold, like a precious metal which we have, which everybody needs to have. That's why the value is so much. Ethereum is basically considered as a electricity. Okay, everything everywhere, whatever, like in a city, if we consider this one thing, what is a next important thing other than this metals? Obviously electricity, because we, most of the people work on the electricity. We need laptop, we need lights, we need fan, we need AC, we need infrastructures, everything, the lift, the escalators, the mall lift, everything, whatever you look around you, the gadgets which we are right now using are working on what? Electricity. If electricity is not there, are we able to use any of this gadget around us? No. So same way, Ethereum is and basically electricity. It's a power in their term, but in a simpler term for making you understand, Ethereum is basically an electricity in which he powers, he supplies all the energy, electricity to everybody to keep them working. Got it? Every of those other cryptocurrency requires Ethereum to get power. Basically, consider Ethereum is a mitochondria. It's a powerhouse, and it provides power to every of those organs, every of those things, everywhere, wherever it is there is a need of a power. Okay, power. Why we need power? For putting, like for example, I use force, like this is A point, this is a B point, this is A point, this is a B point. If I have to put this thing in a B, I need power. Now this power is coming from where? Ethereum. Understand? Bitcoin is just a gold. It is, see, it has value. I'm not considering this like Ethereum, like it is just a gold, it's just a metal. The main power, the main thing is coming from Ethereum. No, Bitcoin is also there. Don't consider as a digital gold. It is named as a digital gold does not mean that it is a gold for real. It is not gold for real. It has other use cases. Okay. Then liquidity. Institutional can buy and sell large amount without crashing the market. To be very frank, yes. The value which institutional people invest. BlackRock CEO said to us one day, that day I talked about, like even if an institutional person invests 2 to 5% of their investment in the crypto market, the market will crash and it will go so high that you won't even believe how much of the investment can come if they start investing 2 to 5% of their investment. Okay, now in that thing what happens is they are restricted. I'm not saying that they are basically restricted, but they are restricted to invest in some other coins which is has very low value, because they know one thing: a coin which has a very low value, if I invest such a big amount in it, the market will crash. It will go maybe 50% up in one day, 100% up in one day, or it may fall 50 to 100% in one day. That kind of stuff can happen with the institutional people investment. But with Ethereum and Bitcoin, those things are avoidable. Why? Because the value is that high. If they invest millions and sorry, not millions, if they invest billions of dollars in XRP, tomorrow XRP, right now it is at some 1.9. Right now XRP is at 1.9. If I invest billions of dollars in XRP today, the market will plunge straight up to $50, 60 or 70 or maybe $100 in one day if $1 billion investment comes. That's why they avoid investing in such coin which is very low price. They invest in such heavy currencies like cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, because they have high value. Their investment can match up that value and they can provide the liquidity to them. The sell liquidity, the buy liquidity, both of the liquidity can be provided by such heavy value. That's the one reason they pick infrastructure. Why most of the investor people are going for Bitcoin, they're going for Ethereum? Because of this one thing. Adoption. Wide usage and credibility reduces the risk and failure. Okay, obviously, if there is something very known in the market, that is the one thing which is going to be invested the most as well. To be very frank, yes.
If Bitcoin is well known in the market, if you buy a Bitcoin, you have at least one assurity, like, okay, I am not, like, for example, I'll give you one example. Okay, okay, good example. Gold. If you buy a gold, consider like you bought in India, or you bought in Africa, you bought in somewhere, you bought in here, you bought in there, you bought in here, bought in there. But all people know this one thing, that Dubai's gold is actually very pure than the other country, right? So most of the people who buy Dubai's gold, they are considered like, okay, I have a little like more precious gold than any other country which I bought, right? It has one name, it has a it has a recognizable value. It's a Dubai gold, it's a pure gold, right? Same way people invest in Bitcoin and Ethereum. Why? Because it has a recognizable value. And it is like, it's Bitcoin. Obviously, it is pure. Obviously, it is the valuable. Obviously, it is this Ethereum. Obviously, it's electricity is required. That's why I'm investing in this. Welcome, user 791530. Welcome on the live stream of zbit.com. My name is Yash, and this is my yesterday's profit, 168.23 USDT. If you want to invest, if you want to earn such kind of value with me, please make sure to join my Telegram channel. This is the link of my Telegram channel. Just click on this more option and join the link. Okay, and you can see here, join Telegram channel fans group. Just click on that thing. It will take you where? It will take you to the zbit.com live with Yash. Yeah, this is my Telegram channel in which I provide market updates, signals, trades, everything. Do not forget to join it. Okay, even yesterday I posted over there, like, you have to come to my live stream and every of those things for gaining profit, in which I provide market updates, signals, trades, everything. Okay, I guess your name is Ashok, user 791530, because I can see Ashok has joined the live stream. Maybe you are Ashok, maybe, I don't know. Okay. Plus, on top of that thing, I just want to explain you one more thing. User 791530. There are two gifts which I provide to everybody. Okay. One is new user gift, which is one Dogecoin for free. Okay. इसका मतलब होता है, मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, आप इंडियन हो तो हिंदी में ज्यादा अच्छे समझेगा आपको। अगर आपने इसके पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपने इसके पहले कभी डिपॉजिट नहीं किया है, आपने इसके पहले कभी ट्रेड भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, मेन तो डिपॉजिट पे है। अगर आपने आज के पहले कभी डिपॉजिट नहीं किया तो सिंपली आप क्या करोगे, ये लाइव स्ट्रीम की ये डिपॉजिट पे क्लिक करके आप पहला डिपॉजिट करोगे, जो है सिर्फ 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए मतलब $3 मिलता है आपको उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपने ये फियाट डिपॉजिट पे क्लिक किया, एंड फिर यहाँ पे आपने लिखा 300 रुपीज। सिंपली आपको यहाँ पे कितना मिला, 3.26 यूएसडीटी आपको मिलता है। आप अपना यूपीआई पेमेंट चूज करो एंड पे कर दो। ठीक है, जैसे ही आपने यूपीआई पेमेंट चूज करके आपने पे कर दिया आगे, उसके बाद क्या होगा, आपको मैं एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपने इसके पहले कभी भी डिपॉजिट नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले तो आप ये 300 रुपए यानी $3 का डिपॉजिट करो। 300 रुपए यानी $3 का डिपॉजिट करो मेरे लाइव स्ट्रीम के थ्रू। डिपॉजिट सिर्फ यहां से होना चाहिए, ये लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट से ही डिपॉजिट होना चाहिए। अगर आप कहीं और जगह से डिपॉजिट करते हो तो आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप डिपॉजिट कर देते हो पहला जैसे आप पहला डिपॉजिट कर देते हो अपना, उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से। समझ में आ गया, एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से आपको मिलता है। ओके, जैसे ही आप डिपॉजिट कर देते हो पहला जैसे आप पहला डिपॉजिट कर देते हो अपना, उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से। एंड इसके अलावा अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हो, कि यार आप वो वाले यूजर हो जिसने ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं, ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं, और आपको फिर भी गिफ्ट चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ी अकेला छोड़ेंगे, मतलब गिफ्ट तो सबके लिए होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग यूजर के लिए गिफ्ट है 20। अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको कितना मिलता है, 200 यूएसडी फ्री।
Welcome user 486284. Welcome on the live stream. If you are a new user, then you get 1 Dogecoin. आपको 1 Dogecoin completely free of cost मिलता है, ठीक है। और अगर आप नए यूजर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग यूजर हो तो एग्जिस्टिंग यूजर के लिए क्या है, आप अगर $20 डिपॉजिट करते हो तो आपको कितना मिलता है, उसका 10 गुना ज्यादा रिटर्न जो है 200 यूएसडीटी फ्री, ठीक है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर आप यहाँ पे आके गिफ्ट सेक्शन में क्लिक करते हैं, देखो गिफ्ट सेक्शन, इस पे आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे क्या देखने मिलता है, डिपॉजिट रिवॉर्ड, डिपॉजिट 20 टू गेट 200 यूएसडीटी फ्री। समझ में आ रहा है। और ये ऊपर से ये आपको ये कॉइन्स मिलते हैं ऐसे, मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं तो मुझे ये मिल रहा है। डोज कॉइन मिला है मुझे 1 पॉइंट इधर, इसका चेक करो। ओके, यहाँ पे मुझे डोज कॉइन मिल गया है। 7 दिन का ये ट्रेडिंग क्रिप्टो गिफ्ट है, जिसमें मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हो ग्रेटर देन इक्वल टू $300 का, मतलब 3000 होता है, थोड़ा महंगा है ये, तो आपको 7 कॉइन मिलते हैं डिफरेंट 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 के, ठीक है। मेरे को पहले दिन इथेरियम मिल चुका है, मेरे को डोज कॉइन मिल चुका है, अभी मेरे को तीसरे दिन एक्सआरपी मिलेगा, चौथे दिन शिबा इनू मिलेगा, पांचवें दिन पेपे मिलेगा, छठवें दिन सोलाना और सातवें दिन बीटीसी मिलेगा मुझे, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा ये महंगा पड़ता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग जो गिफ्ट है वो थोड़ा महंगा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये डिपॉजिट का जो रिवॉर्ड है ये बहुत सस्ता है। सिर्फ आपको 20 का डिपॉजिट करना है और आपको मिलता है $200, 10 गुना ज्यादा। ये बहुत सस्ता है। आपको सिंपली क्या करना है, ये डिपॉजिट बटन पे क्लिक करके, यहां पे फियाट डिपॉजिट पे क्लिक करके आपको सिर्फ कितना 1800 में हो जाएगा, शायद नहीं 1800 में नहीं होगा, 1900, हाँ 19, मतलब 1900, सिर्फ और सिर्फ 1900 अगर आप डिपॉजिट करते हो, ये $20 जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपको कितना मिलता है, आपको मिलता है $200 फ्री, 10 गुना ज्यादा। अगर मैं अभी $200 पकड़ता हूं तो ये कितना होता है, 19,000। आपको एक 19,000 के वैल्यू का डॉलर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 19,000 किया तो मेरे को कितना मिल रहा है, यहाँ पे 206। समझ में आ रही है। तो अगर आप सिंपली सिर्फ 1900 यानी अगर $20 आज अभी डिपॉजिट करते हो, मेरे लाइव स्ट्रीम के थ्रू ही करना है, पर ठीक है, ये लाइव स्ट्रीम के थ्रू ही डिपॉजिट करते हो तो आपको कितना मिलता है, $200 फ्री। ये आप इससे आप ट्रेड ले सकते हो, इससे अगर ट्रेड कमा के जो आपको पैसा मिलेगा वो आप विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है। तो प्लीज मेक श्योर करो कि 2 गिफ्ट है लाइव स्ट्रीम में। एक पहला गिफ्ट है न्यू यूजर गिफ्ट, 1 डोज कॉइन फ्री, जिसके लिए क्या करना है, सिंपली एक चीज करनी है, जिसमें डिपॉजिट बटन पे क्लिक करके आपको सिर्फ और सिर्फ ₹300 यानी $3 डिपॉजिट करना है। जैसे आप $3 डिपॉजिट करते हो, मेरे लाइव स्ट्रीम का जो ग्रुप है, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टेलीग्राम का ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन करो, अपना स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में भेजो, एंड उसके बाद में मैं वेरीफाई करूंगा। जैसे ही वो वेरीफाई करके मैं कंफर्म हो गया, मैं आपके अकाउंट में 1 डोज कॉइन ट्रांसफर कर दूंगा। समझ में आ गई चीज, बड़ी सिंपल बड़ी आसान सी चीज है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है उसमें अपने पेमेंट का। मैं चीजें वेरीफाई करूंगा कि आपने पेमेंट सही में किया है नहीं किया है, ये वो चीजें जैसी वेरीफाई हो जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया है, मैं आपके अकाउंट में 1 डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा। दूसरी चीज जो एग्जिस्टिंग यूजर की थी, यहाँ पे कि 20 डिपॉजिट करो 200 यूएसडी मिलता है, वो सेम चीज आपको जैसे ही हमने पेमेंट कर दिया उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में भेजो, ठीक है। ग्रुप का एक्सेस कहां से मिलता है, यहाँ पे मोर का ऑप्शन क्लिक करो, हेलो हाय यूजर 754073, हेलो वेलकम, हेलो हाय हाउ आर यू। तो यहाँ पे आपको ये मोर का ऑप्शन दिख रहा है, ये मोर के ऑप्शन पे क्लिक करो एंड फिर यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। बस पहला टेलीग्राम चैनल यहाँ पे फैंस लिखा हुआ है, बस वो वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। हेलो यूजर 754073, हाउ मे आई कैन हेल्प यू, कैसी मदद कर सकता हूं मैं आपकी। और ये मेरा कल का प्रॉफिट है वैसे, ये यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे यस्टरडेज प्रॉफिट 168.23, ये मैंने रिसॉल्व यूएसडीटी में ट्रेड करके कमाया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, रिसॉल्व यूएसडीटी,
ये रिसॉल्व यूएसडी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक 125 का ट्रेड लिया, 125 का प्रॉफिट है और प्लस दूसरी जगह पे 42.49 का प्रॉफिट है। इन दोनों को आप एडिशन करते हो तो ये बनता है 168.23। ठीक है, अगर ऐसे ही प्रॉफिट कमाने हैं तो प्लीज लाइव स्ट्रीम के ग्रुप में आके प्लीज प्लीज ज्वाइन करके सिग्नल का वेट कीजिए। मैंने शुरुआत यहाँ पे $100 से किया था, आज ये 652 बन चुका है, $550 अर्न हो चुके केवल 8 दिन में। मेरा चैलेंज डे दिख रहे हो आप, चैलेंज डे कितना है मेरा 8, केवल 8 दिन का प्रॉफिट है $550। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। $550 अर्न हो चुके केवल 8 दिन में। मेरा चैलेंज डे दिख रहे हो आप, चैलेंज डे कितना है मेरा 8, केवल 8 दिन का प्रॉफिट है $550। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। Okay, let's come back to our topic. Adoption. Wide use cases, credibility, reduce risk of failure. Yes, we have those things like in the adoption, wide use cases, wide usage. 1 second. Yeah, we have in like in adoption, we have a wide use cases of the Bitcoin and Ethereum. Yes, we do have. Like I said, Ethereum is a powerhouse. It supplies power to everything, every cryptocurrency out there. Okay, Bitcoin is considered as the gold, digital gold. Welcome user again 791530, user 201394. Welcome on the live stream. Thank you so much for being over here. If you have any doubt, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो प्लीज लाइव स्ट्रीम के वहां पे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, ये आपके पास जो ऑप्शन दिया है वो उसी के लिए दिया है कि आप कमेंट करके वहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछ लिया करो। अभी मैं आपको वो कॉइन्स बता रहा हूं जो इंस्टीट्यूशनल के लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहले मैं टाइप्स ऑफ कॉइन समझा रहा हूं, जिसमें हम पहला समझ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो होते हैं लेयर 1 के कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, एवेलांच, कार्डिनो एंड सोलाना। ये 5 टाइप के कॉइन होते हैं। ये 5 टाइप के कॉइन होते हैं जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर ये बिल्डिंग है, उसका बेस है, ये बेस है, ये इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, इनके ऊपर पूरा क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट खड़ा है। ठीक है, तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन के लोग होते हैं, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े फर्म्स, बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, ये सब लोग ये बाकी कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करते। रैंडम से कोई भी कॉइन होते हैं जो जीरो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं या फिर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इनमें ट्रेड नहीं करते। ये किन में ट्रेड करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन आता है? बिटकॉइन आता है, इथेरियम आता है, कार्डिनो आता है, एवेलांच आता है, सोलाना आता है। इन्हीं के साथ और 50 से 70 कॉइन और है जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये ट्रेड क्यों करता है? पहले तो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी है। ये दिस नेटवर्क्स आर हाईली डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। बिटकॉइन को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही उसके ब्लॉकचेन में वो छानबीन कर सकता है। छानबीन ऐसे मतलब है तो ट्रांसपेरेंट, ये दुनिया का हर एक छोटा से बड़ा बच्चा यहाँ ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है वो देख सकता है। बट कहां से आया वो पैसा, किसका पैसा है वो, ये चीजें नहीं देख सकते। पैसा ट्रांसफर होते हुए देख पा रहा हूं मैं, पर जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जहां पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक रोहन है और यहाँ पे राहुल है। अब उस रोहन ने राहुल को 100 रुपए भेजे, ये हमें दिख रहा है, ये पूरे ब्लॉकचेन में सबको दिखेगा, ये ट्रांसपेरेंट है। बट ये अभी रोहन के पास 100 रुपए आए कहां से, ये नहीं चेक कर सकते। ये चेक करने की इजाजत ना ही बैंक को है और ना ही गवर्नमेंट को है। इसलिए इनको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है कि इन ब्लॉकचेन में जो भी हो रहा है, जो भी पैसा ट्रांसफर, बड़ा छोटा कितना भी, कैसा भी ट्रांसफर, एक दिन में लाखों भेज दे, एक दिन में 4-5 करोड़ भेज दे, एक दिन में 10,000 करोड़ भेज दे, इनमें कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। गवर्नमेंट का इन चेनों से कोई लेना देना नहीं है। ये चेन गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन नहीं मानती, ना ही ये बैंक्स को मानती है। डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि दो लोगों को यहां से निकाल दिया है। ठीक है,
अभी हमारा जो बैंक का पैसा है उसमें दो लोग का कंट्रोल होता है, एक होता है गवर्नमेंट का जो पैसा छापती है, जो पैसे का वैल्यू कम या घटा या बढ़ा सकती है सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करके, ठीक है। और दूसरा है कि बैंकिंग सिस्टम हमारा हर एक पैसा, मेरा अगर 1 रुपए भी मैं आज भी किसी को भेज देता हूँ, वो पूरा बैंक मेरा 1 रुपया पूरा ट्रेस कर सकता है हर जगह से कि इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, क्या कर रहा है, ये हर चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि ब्लॉकचेन में ये बैंक और गवर्नमेंट को हटा दिया कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हमें बिटकॉइन के पास अपना खुद का सप्लाई है और अपना खुद का डिमांड है, ठीक है। उसका सप्लाई मैक्सिमम है 21 मिलियन का, उसके ऊपर ना ही वो बन सकता है ना ही कम हो सकता है, ठीक है। और जो ब्लॉकचेन सिस्टम है ये बेसिकली हमारा बैंक का सिस्टम है। एक ब्लॉकचेन के थ्रू वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है इधर उधर यहां से वहां से, तो इसमें बैंक की जरूरत नहीं है। बैंक एक मीडियम था कि मैं 1 रुपए दे रहा हूं, वो एसबीआई में जाएगा, एसबीआई से 1 रुपए वो उसके अकाउंट में जाएगा। ये अभी बीच के बंदे की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करूंगा। एंड ये है ब्लॉकचेन के वॉलेट। ये बैंक के वॉलेट नहीं है, ये बैंक अकाउंट्स नहीं है, ये ब्लॉकचेन के वॉलेट है, ब्लॉकचेन के अकाउंट, ठीक है। ये सीधा पॉकेट टू पॉकेट जा रहा है, एक पर्सन टू पर्सन। इसमें कोई बीच में बैंक में ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। इसलिए इनको सिक्योर और हाईली डिसेंट्रलाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप कुछ भी कर लो, इससे ना गवर्नमेंट आपको कुछ छेड़ सकती है ना ही आपको बैंक कुछ सवाल पूछ सकती है। अगर इसमें मेरे पास अगर आज मेरे पास 1000 बिटकॉइन भी है और मैं 1000 बिटकॉइन लेके घूम रहा हूं, 1000 बिटकॉइन नहीं नहीं बोल के मतलब मेरे पास है, मतलब कुछ मिलियन डॉलर का पैसा है मेरे जेब में, मेरे पास कोई गवर्नमेंट आके मुझे नहीं पूछ सकती कि तुम्हारे पास ये कहां से आया। ना ही उनके पास अथॉरिटी है कि वो मेरे वॉलेट में झांक के देखे, ना ही उनके पास अथॉरिटी है कि वो मेरा वॉलेट लेके चले जाए या फ्रीज कर दे, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इन चीजों की। ना ही वो बैंक पता लगा सकते कि इसका पैसा यहाँ से कहां से आ गया, कैसा आ गया, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि इथेरियम जो है, जैसे मैंने क्या बोला कि इथेरियम एक इलेक्ट्रिसिटी है। पकड़ एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिटकॉइन हमारा क्या है, गोल्ड है, जो एक हाईली मतलब एक होता है ना कि दुनिया में डायमंड, गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स, ये वो है कि यार सुंदर है, प्रेशियस है, प्योर है, फलाना डिमकाना जो भी है, और उनका एक बड़ा 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 वैल्यू है, कुछ यूज है उसका। तुम गोल्ड को पहनने के अलावा कहीं और यूज कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। तुम डायमंड की रिंग पहनने के अलावा कहीं और यूज कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे। तो ये इनका जो वैल्यू है वो कहां से आ रहा है? उनके प्रेशियसनेस पे आ रहा है कि ये डिमांड हम लोग दे रहे हैं उसे। अब उसी को साइड में रख के चलते कि एक गोल्ड को साइड में रखो, डायमंड को साइड में रखो, और बाकी के जो क्रिस्टल वगैरह है उनको साइड में रखो, और एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी रखो। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज कौन सी है? क्या हमें गोल्ड की जरूरत है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है? क्या हमें दिन ब दिन मतलब जो भी मैं ऑफिस में जा रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं कोई कंपनी चला रहा हूं, मैं कोई स्टार्टअप चला रहा हूं, मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कई है, मुझे हर जगह पे हर एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। बिना इलेक्ट्रिसिटी के मेरा ना ही कोई बिजनेस है, ना ही कोई कंपनी है, ना ही मेरी जॉब है, ना ही मेरा कुछ है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कुछ भी नहीं है इस पॉइंट पे। फिर हमें फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी निकाल लो तो फिर हम वहीं चले जाते हैं वो जंगलों में, फिर वही कि हंट करो, फिर वही कपड़े पहनो पत्ते उत्ते के, वही कर सकते हैं। अगर वहां से आ चुके किस वजह से? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये इथेरियम क्या है? इथेरियम बेसिकली हमारे पूरे ब्लॉकचेन का इलेक्ट्रिसिटी है। ये इथेरियम हर एक ब्लॉकचेन को पावर सप्लाई करता है, ठीक है। बिटकॉइन हमने बस एक गोल्ड के तौर पर रखा हुआ है कि यार ये हमारा सबसे प्रेशियस वाला है, इसे हम अलग रखते हैं। पर इथेरियम जो है वो एक्चुअल में सबसे यूजफुल है क्योंकि वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन में जहां पे भी आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, या फिर कोई ब्लॉक मतलब समझ लो एक्सआरपी को अगर कुछ काम करना है, सोलाना का कुछ काम करना है, उसको यहां से वहां कुछ करना है, उससे कुछ यूज केसेस है, सब कॉइन्स को मीम कॉइन से लेके एनएफटी से लेके डिसेंट्रलाइज से लेके हर एक दुनिया का हर एक क्रिप्टो करेंसी को पावर कहां से जाता है? इथेरियम से जाता है। अगर इथेरियम कल बंद पड़ गया, पूरा क्रिप्टो करेंसी बंद पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा उनके पास पावर भेजने के लिए कोई दूसरा सोर्स नहीं है।
समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनके एक हाई यूज केसेस होते हैं, इन्हीं कॉइन में इंस्टीट्यूशन के लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब दूसरा क्या है? लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। अभी इंस्टीट्यूशन के जो लोग होते हैं, अभी मैंने एक कल जो न्यूज बताई थी वो डाइवोर्स मीटिंग की, उसमें क्या बोला था ब्लैक रॉक सीईओ ने। ब्लैक रॉक, पहले तो एक बात बता देता हूं, ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा इक्का है, मतलब हुकुम का इक्का पकड़ लो उसको। वो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा हैंडल करता है, वो ब्लैक रॉक सीईओ है। इस दुनिया का पैसा बता रहा हूं, ट्रिलियन डॉलर्स का पैसा है उसके पास में। ये पूरे वर्ल्ड में कितने भी जितने रईस लोग हो गए, वेल्दियस्ट टू वेल्दियस्ट, जो ऐसे ब्लॉकचेन अगर हम बनाए, ऐसे एक हायरार्की लेवल बनाए, जो टॉप 1% में आते हैं, जिनके पास वो लेवल का पैसा है, वो उनका पैसा हैंडल करता है कि उन्हें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। उनके बैंक अकाउंट उसके पास अभी जेब में पड़े हुए हैं। अगर एक दिन वो बंदा लेके भाग गया तो वो दुनिया का सबसे रईस इंसान कहलाएगा, उसके पास उतना पैसा है। ठीक है, अब वो उस बंदे ने, मतलब उसका, मैं ना ये माइक्रो स्ट्रेटेजी तो नहीं है यहाँ पे, ब्लैक रॉक सीईओ का आईबिट में बाद में दिखाता हूँ, बाद में दिखाता हूँ उसको मैं। ठीक है, अभी वो, उसने एक कमेंट दिया उस मीटिंग में कि अगर इंस्टीट्यूशनल के लोग, मतलब ये फाइनेंशियल फर्म, ये बैंक, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये माइक्रो स्ट्रेटेजी, ये मेटा प्लैनेट, ये बड़े बड़े लोग जो बड़ा बड़ा पैसा लगा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, ये अपनी कंपनी का 1% भी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अभी शुरुआत है क्रिप्टो करेंसी की। अभी तक हमने क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं किया है। ग्लोबली एक्सेप्ट मतलब क्या होता है कि आज आप और मैं, आज भी हम अपने करेंसी यूज कर रहे हैं, अपना आईएनआर यूज कर रहे हैं, कोई डॉलर यूज कर रहा है, कोई दिराम यूज कर रहा है, कोई येन कर रहा है, कोई यूएन कर रहा है, कोई रूबल कर रहा है। ये अभी भी ट्रेडिशनल करेंसी है, नेशनल करेंसी। अभी तक हमने पेमेंट गेटवे के लिए बैंक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत, मतलब मेजॉरिटी के, मतलब सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि मेरे को आज भी अगर मेरे को अपने घर पे पैसा भेजना है, मैं बैंक के थ्रू भेजता हूँ। अगर कोई भी बंदा कहीं भी सैलरी भी आ रही है तुम्हारी, या कोई एक बड़ी कंपनी से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लेना है, वो सिर्फ बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर करे जा रहा है। अभी तक हमने ब्लॉकचेन को 100% इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं ये कर रहे हैं, पर वो भी कितने? सिर्फ 1%। उसने एक चीज स्टेटमेंट में यही बोली कि अगर हम इंस्टीट्यूशन के लोग अपने इन्वेस्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ 2 या 5% भी इन्वेस्ट कर दिया, ये पूरा मार्केट ऐसा रॉकेट में ऊपर जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। उसने ये बोल दिया। ठीक है, अभी उसी से हम लिक्विडिटी समझते हैं कि उनके पास सिर्फ 2 से 5% इन्वेस्ट करके उनके पास इतना पैसा है कि वो पूरी मार्केट उठ जाएगी या फिर पूरी मार्केट गिर जाएगी, उतना पैसा है उनके पास। ठीक है, तो अभी लिक्विडिटी समझते हैं उसके लिए। लिक्विडिटी क्या होता है कि पैसा आना या जाना। लिक्विडिटी बेसिकली पैसा है। ठीक है, कि गाड़ी को अगर रन करना है तो उसे क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल क्या हो गया? उसका लिक्विडिटी है। अब पेट्रोल जितना है वो उतना भागेंगी, पेट्रोल जितना कम है उतना जल्दी रुक जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक चीज समझो कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये ऐसे कोई रैंडम से कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते, ये ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी थोड़े महंगे हैं। ठीक है, जैसे बिटकॉइन हो गया, जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया। ये इन कॉइन में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मैं अपना पैसा डालता हूं, बिलियन का डॉलर, अगर मैं कल एक्सआरपी में डाल दूं, 1.9 पे ट्रेड कर रहा है आज एक्सआरपी, अगर कल मैं बिलियन डॉलर का एक्सआरपी पे इन्वेस्ट कर देता हूं, एक्सआरपी का प्राइस सीधा उठ के 50, 60 या 100 डॉलर हो जाएगा एक दिन के अंदर, एक इन्वेस्टमेंट के साथ, बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट। इसलिए वो ऐसे कॉइन्स में अवॉइड करता है इन्वेस्ट करना, वो पिक करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, क्योंकि वो महंगे हैं। उनके पास उतना पैसा है कि वो ये महंगे कॉइन खरीद सकते हैं चुटकियों में। एंड उनका इतना पैसा है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो उतनी नहीं दिखती बिटकॉइन में, क्योंकि है वो इतना महंगा। 89 के डॉलर का है वो, नहीं नहीं बोल के लगभग 9 लाख, 9 से 10 लाख का एक कॉइन है वो। ऐसे कॉइन में जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनका पैसा भी बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ये एक चीज है। और बेचना भी, अगर वो लोग खरीदना या बेचना चाहे, खरीदने तो खरीद लेते हो, पर अगर बेचना चाहे तो आगे वाला उनका उतना पैसा दे भी तो।
अगर मैं कल जाके XRP का वो जितना भी मैंने मिलियन बिलियन डॉलर में बेच देता हूं, तो तुम समझ रहे हो मुझे कितना नुकसान हो जाएगा, पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा। पर सेम जाके अगर वो, जैसे हमने देखा ये वेल रिसेंटली उन्होंने कितना किया, 30,000 वेल, 30,000, एक वेल ने 30,000 बिटकॉइन डंप कर दिया था नवंबर में। इसलिए हमें क्या दिखा था, 100 से लेके मार्केट सीधा 80 तक गिर गया था। अब वो गिरा क्यों था, क्योंकि 30,000 बिटकॉइन गिरा दिया था उसने, बेच दिया था, 30,000 बिटकॉइन बेच दिया था। कितना प्रॉफिट हुआ उसको। अब उतना प्रॉफिट लेने के लिए बिटकॉइन के पास पैसा है, तो इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं कि ऐसे कॉइन पिक करते हैं जो हमें वापस से प्रॉफिट और लिक्विडिटी दे भी पाए, कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया है बिलियन डॉलर, मुझे कल जाके प्रॉफिट चाहिए अपना मिलियन या बिलियन डॉलर का, तो ऐसे कॉइन पिक करते हैं जिससे मैं अगर पैसा निकालू भी तो वो मार्केट क्रैश ना हो जाए। समझ रहे हो? ठीक, ये हो गया एक, लेयर वन। अभी हम लेयर टू की बात करते हैं कि लेयर टू में क्या है। लेयर टू होते हैं स्केलिंग सॉल्यूशंस। अभी फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपने एक स्कूल बनाई, उस स्कूल में शुरुआत की एक वीक में आपने बड़ा अच्छा सा, मतलब सारे टीचर ये वो चीज सब अच्छे से रखा। एक वीक में आपको एक रिपोर्ट मिलती है कि यार ये चीजें हमें दिक्कत हो रही है इसमें, ठीक है। अब उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे, उस स्कूल में थोड़ा एक्स्ट्रा का इन्वेस्टमेंट करके एक्स्ट्रा की चीजें तुम ऐड करोगे जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, राइट। अभी सेम चीज आई थी लेयर टू के ब्लॉकचेन में। लेयर वन में क्या था, फाउंडेशन था, कि यहाँ पे ये मेरा ब्लॉकचेन का बेस है, इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बनी है जो हमारा पूरा क्रिप्टो का मार्केट है। अब उस क्रिप्टो के मार्केट में कुछ कुछ छोटी छोटी तकलीफें आई, कुछ कुछ प्रॉब्लम आई, कि पेमेंट को थोड़ा टाइम लग रहा है, पेमेंट थोड़ा लेट पहुंच रहा है, पेमेंट बहुत महंगा भी हो रहा है, उसको सस्ता करना है, ये ब्लॉकचेन बहुत महंगा पड़ रहा है, एनर्जी बहुत ले रहा है। ये सब चीजों को धीरे 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 उन्होंने सॉल्व किया। उससे क्या बना, लेयर टू, जिसको नाम दिया था स्केलिंग सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है कि लेयर टू हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जो लेयर वन में दिक्कतें आई थी कि इथेरियम बहुत महंगा है एक ट्रांसफर करने के लिए, तो सस्ता हमने सोलाना बनाया। सोलाना बहुत ही चीप और सस्ता है मार्केट में पैसा भेजने के लिए, XRP उससे ज्यादा सस्ता है। ये ऐसे से करके क्या किया उन्होंने, एक सॉल्यूशन, मतलब जो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई उसके लिए सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन मतलब क्या है, नया ब्लॉकचेन बनाया, नया ब्लॉकचेन यानी नया क्रिप्टो कॉइन बनाया, ठीक है। अब उसमें कौन से लेयर टू आर बिल्ट ऑन टॉप लेयर वन ब्लॉकचेन, जैसा मैंने बताया उसके ऊपर बनाए, मेक ट्रांजैक्शन फास्टर एंड चीपर, ठीक है। जो भी उन्हें दिक्कतें आई कि ट्रांजैक्शन मतलब ए यहां से पहुंचने में वहां तक जाने में कुछ 1 घंटा लग जा रहा है, यार इतना नहीं लगना चाहिए, पैसा तुरंत आना चाहिए, तो उन्होंने लेयर टू बनाया उसको सॉल्व करने के लिए। अब लेयर टू में क्या हो रहा है, दे डोंट रिप्लेस लेयर वन बट एनहांस इट्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एनहांस कर रहा है। अभी मतलब एक बात समझ लो कि मैंने एक क्या किया कि ये मेरा लैपटॉप है, अब इस लैपटॉप की जो स्पेस है मेरी, वो मैक्सिमम सिर्फ 512 GB ही है, उसके ऊपर मेरे लैपटॉप में स्पेस नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं एक नया टीवी खरीद के लेके आ जाऊंगा, एक्सटर्नल टीवी। जब भी मैं इसमें अटैच करूंगा मेरे पास स्पेस बढ़ जाएगी, और इसको अटैच निकाल दूंगा मेरे पास स्पेस कम हो जाएगी। तो ये क्या किया मैंने, ये एक सोल्यूशन निकाला कि अगर मेरे लैपटॉप को मेरे को फेंकना नहीं है, क्योंकि मैं इसको फेंक नहीं सकता, ये मेरा लैपटॉप, इसमें मेरा सारा काम है, पर इसको मैं मदद करने के लिए एक एक्सटर्नल जीबी, एक्सटर्नल टीवी यहाँ पे ये कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं, जिससे मेरे लैपटॉप की स्पेस बढ़ जा रही है। सेम चीज बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डिनो, एवेलांच और ऐसे कॉइन्स में एक प्रॉब्लम दिखी थी कि यार ये जो कॉइन्स है ये बहुत महंगे हैं, एक तो पहली चीज, उसके बाद में कोई भी पैसा यहां से ट्रांसफर हो रहा है उसको समय भी बहुत लग रहा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्केलिंग बनाई, जहां पे उन्होंने बनाया आर्बिट्रियम, ऑप्टिमिज्म और पॉलीगॉन। ये तीन ऐसे ब्लॉकचेन है जो बिटकॉइन से, इथेरियम से ज्यादा फास्ट काम करते हैं और ज्यादा चीपर भी है, मतलब कम पैसे में आपका पैसा यहां से वहां तुरंत चले जाता है, ग्लोबल ट्रांसफर। ये सारा ब्लॉकचेन ग्लोबल ट्रांसफर, ओके। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इंडिया के बाहर नहीं बेच सकते, आप यूएसए के बाहर नहीं बेच सकते, आप चाइना के तक नहीं बेच सकते, नहीं, पूरे ग्लोबल में जहां पे भी एक बंदे ने अपना क्रिप्टो वॉलेट डाउनलोड कर लिया है, मतलब उसको आप पैसा भेज सकते हो, चाहे वो 100,000 किलोमीटर दूर हो आपसे या कितना भी दूर हो, पैसा चले जाएगा विदाउट बैंक, बैंक की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है।
अभी ये 3 एग्जांपल दिया मैंने कि आर्बिट्रियम, ऑप्टिमिज्म और पॉलीगॉन, ये ऐसे 3 ब्लॉकचेन बने थे लेयर 2 में, स्केलिंग में, जो आपको मदद करते किस चीज के लिए, जो आपको मदद करते कि मार्केट में चीपर और सिक्योर और फास्ट ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशनल इसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ठीक है, इन्वेस्टर इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, आर्बिट्रियम में, पॉलीगॉन में, ऑप्टिमिज्म में, इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? एफिशिएंसी रिड्यूसेस फीस, स्पीड अप द ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि मेरे लैपटॉप में स्पेस कम है, मैंने टीबी लगा दी, खत्म बात, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उनको क्या चाहिए कि उनका जो पेमेंट है वो फास्ट और चीपर चले जाए। ये कॉइन्स है जो फास्ट और चीपर में इन्वेस्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू, स्ट्रेंथ, लेयर 1 अडॉप्शन। ऑब्वियसली मैं जितना इसे यूज करूंगा मेरा लेयर 1 उतना ही अच्छा होगा। अभी इसका मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ करता है लेयर 1 को। अब इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली समझाता हूं। 20 USDT गिफ्ट प्लीज। 20 USDT गिफ्ट पाने के लिए आपको इसमें मिला होगा शायद तक, राइट? आपको तो मिला ही होगा यार, ऐसा क्या बात कर रहे हो? आपको इसमें नहीं मिला? मतलब जब आप पहला जीबिट डाउनलोड करते हो तो आपको मिलता है 20 USDT गिफ्ट प्लीज। 20 USDT गिफ्ट पाने के लिए आपको इसमें मिला होगा शायद तक, राइट? आप जीबिट जब डाउनलोड करते हो तो आपको एक मिलता है, मतलब बोनस अमाउंट 220 USDT का। मतलब जब आप पहला जीबिट डाउनलोड करते हो तो आपको मिलता है। Welcome user 595161. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part. We will soon start our live trading once my topic is over. I will soon start, and my today's topic is very important because these are the coin which investor invest where investors are investing. Don't invest where investors are not investing. Okay. So today's topic is very, very important for all of you people. Knowing where the investors are actually investing and what are the coins which they invest. Why do they invest in such coins? I'm explaining everything. Right now I'm at layer 2. Layer 2 they invest at Arbitrium, Optimism, Polygon. Why? Because it is efficiency, reduces fees, speed up the blockchain transfer and complementary value. Now what is complementary value? मैं इसी पे बात करता हूँ कि स्ट्रेंथ करता है लेयर 1 को। स्ट्रेंथ कैसे करता है? अभी मेरे को एक बात बताओ। अभी ये मेरा लैपटॉप है, इसमें मैंने 512 GB ही है। मैं इसमें भरते गया, 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 512 मैंने फुल कर दिया। अब ये मेरे को परफॉर्मेंस देगा क्या? 512 GB पूरा होने के बाद ये मेरा लैपटॉप मुझे परफॉर्मेंस देगा क्या? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि स्पेस ही नहीं है, हैंग होना चालू करेगा, वो थोड़ा लैपटॉप स्लो हो जाएगा, राइट? अभी मैं अगर इस पे टीबी लगा देता हूँ, एक्सटर्नल स्पेस दे देता हूँ मैं इसको अच्छी वाली, 1 TB, 1 TB मतलब होता है, नहीं नहीं बोल के 10,000 GB के आसपास, पता नहीं ऐसे कुछ तो भी होता है 1 TB। मैं उतनी स्पेस दे दिया उसको। अब क्या होगा? मैंने उसको 1 TB की स्पेस दी, अब मेरा लैपटॉप वापस से एकदम फास्ट काम करना चालू कर देगा। तो मेरे लैपटॉप को मैंने क्या दिया? स्ट्रेंथ दिया। ये सेम चीज लेयर 1 पे होता है। अगर लेयर 2 आप जितना यूज करते हो, लेयर 1 उतना फास्ट काम करता है, उसको उतनी स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है। Selective invest institutional invest only in proven layer 2 networks like strong adoption. सब में नहीं करते। जैसे मैंने क्या बोला कि एक लेयर 2 में कितने हैं, 20 से 30 मेजर कॉइन्स है इसके अंदर। ठीक है, लेयर 2 के प्रोजेक्ट में, बट सबको यूज नहीं किया जाता। किन को यूज किया जाता है? सिर्फ ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम और पॉलीगॉन, ये 3 मेन कॉइन है जिसमें वो भर भर के इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद में रिस्क कंसिडरेशन, स्मॉल एंड अनप्रूवन लेयर 2 आर टू रिस्की फॉर लार्ज फंड्स। जैसे मैंने बोला कि 3 जो मेन है, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन, ये तीनों पे फोकस करो, बाकी कॉइन पे फोकस मत करो। उसके बाद आते हैं हमारे स्टेबल कॉइन्स। अब स्टेबल कॉइन्स क्या है? स्टेबल कॉइन्स का नाम स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो स्टेबल है, ऑब्वियसली इसलिए नाम दिया है स्टेबल। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल, उसको स्टेबल बोलना भी नहीं चाहता एक्चुअली, वो स्टेबल, उसको ना स्टिल बोलना चाहिए था, स्टिल कॉइन्स। स्टिल कॉइन्स क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू ना ही उठ रही है और ना ही गिर रही है। समझ में आ रही है बात? स्टेबल कॉइन उन्हें नाम दिया, पर उनका एक्चुअली नाम स्टिल कॉइन होना चाहिए। स्टिल मतलब क्या होता है? एक जगह, एक जगह पे स्टेबल। ऐसा मतलब स्टेबल का मतलब हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा हिल सकता है, थोड़ा थोड़ा हिल सकता है, पर स्टिल क्या है कि एक जगह पे है वो। एंड ये सारे स्टेबल कॉइन सिर्फ एक जगह पे, इनका वैल्यू ना ही ऊपर जाती है और ना ही नीचे गिरती है। ठीक है। अब ये कौन से कॉइन है? ये कॉइन है 3,
Stable coins are cryptocurrency designed to stay stable in the price, usually pegged to fiat currency like US dollar, primarily used for trading, hedging and storing value. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यूएसडीटी पेग्ड मतलब क्या है, यूएसडीटी जो हम यूज करते हैं, यूएसडीसी जो थोड़ा वो सेंट्रलाइज बैंक का है, एंड डीएआई, ये तीन है जो एग्जैक्टली सेम वैल्यू, मतलब डॉलर एक है तो यूएसडी की वैल्यू भी एक है, $1 इक्वल्स टू 1 US dollar, 1 USDT, $1 इक्वल्स टू 1 USDC, $1 इक्वल्स टू 1 DAI, सेम वैल्यू, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, 1:1 रेशियो, ये एक है तो ये एक होगा, ये दो है तो ये दो होगा, ये तीन है तो ये चार होगा, मतलब ये सेम सेम होगा, ठीक है। उसके बाद में और कौन से अदर करेंसी, जैसे एक यूरो की भी है जिसे हम UEURT बोलते हैं, और एक GBP है, स्टेबल कॉइन है जो रेयर है, GBP है, मैंने सुना नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, 1:1 रेशियो, मैं देखना चाहूंगा GBP, ये दो है तो ये दो होगा, ये तीन है तो ये चार होगा, मतलब ये सेम सेम होगा, ठीक है। उसके बाद में और कौन से अदर करेंसी, जैसे GBP जिसे हम UEURT बोलते हैं, और एक GBP है, स्टेबल कॉइन है जो रेयर है, GBP है, मैंने सुना नहीं है, मैं देखना चाहूंगा 1.3, ठीक है, GBP 1.3, ठीक है। मार्केट कैप नहीं देखना है मुझे, डोमिनेंस परसेंटेज, सिंपल सिंपल दिखाओ यार, 0.1, 0.99, सिर्फ $1 ओनली, मार्केट कैप नहीं देखना है मुझे, डोमिनेंस परसेंटेज, और एक EURT देखना है मुझे, उसका वैल्यू क्या है, 0.99, सिर्फ $1, 0.07, और एक EURT देखना है मुझे, ओके, देख लिया, वॉस्ट। तो ये चार कॉइन है, मतलब $3 के रिलेटेड है, जो है USDT, USDC और DAI। उसके अलावा जो कॉइन है वो है एक EURT जो यूरो का डिजिटल करेंसी है, और एक GBP है जो स्टेबल कॉइन है, बहुत रेयर है, ठीक है। हाउ मेनी एग्जिस्ट, ये करते हैं 30 से 40, क्या बात कर रहे हो, with USDT stable coins dominating 70-90% ऑफ द वॉल्यूम, USD डॉलर डोमिनेट कर रहा है पूरा मार्केट को इस टाइम पे, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी सिर्फ USDT में ही खरीद सकते हो, ये आपने एक चीज नोटिस किया हो पूरे मार्केट में, ठीक है। अब इसके बाद में व्हाई इंस्टीट्यूशन पीपल इन्वेस्ट इन यूज दैट, क्यों करते हैं, इजी टू मूव लार्ज अमाउंट बिटवीन एक्सचेंजेस, हमें 10 बार, अगर मेरे पास एक USDT है, समझ के चल लो एक, कि मेरे पास डॉलर में पैसा है, पकड़ लो मिलियन का, अब वो मैंने पूरा मिलियन कर दिया है USDT में, ठीक है, मेरा USDT है मिलियन में पूरा, अब वो मुझे अगर ट्रांसफर भी करना है, मिलियन अगर डॉलर में ट्रांसफर करो बैंक से, तो मुझे बहुत पूछेगा वो, कहाँ से आए, किसको भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, मैं ईडी भेजू क्या तेरे घर पे, ये सब चीजें वो पूछेगा मुझे, ठीक है। बट अगर मैं DT ट्रांसफर करता हूँ, उसमें लिए उसके लिए मेरे को बैंक को पूछने की जरूरत नहीं है, बैंक मेरा ट्रांजैक्शन देख नहीं सकता, मुझे ट्रैक नहीं कर सकता, ना ही ईडी मेरे घर पे भेज सकता, चाहे वो $1 million का भी ट्रांजैक्शन हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो DT में, यानी क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल ब्लॉकचेन के थ्रू मेरा पैसा इधर उधर ट्रांसफर हो, तो इसीलिए क्या करते हैं कि लिक्विडिटी इजी हो जाती है इसको बेचने, खरीदने और इधर उधर हिलाने में, इधर उधर हिलाने मतलब कि अगर किसी को उधर जरूरत है, मेरे को इन्वेस्ट करना है, मैं उसको DT में भेज देता हूँ पैसे, इसको किस चाहिए, मैं इसको भी DT में भेज दूंगा पैसे, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी, मैं DT में प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, मेरे को कार खरीदनी महंगी वाली, मैं DT में खरीद लूंगा, क्यों, क्योंकि ईजी है, आसान है,
डीटी में खरीदते हो तो ये बहुत आसान हो जाता है। ये बिना बैंक को किसी को खबर भी नहीं पड़ती कि तुमने खरीद लिया है। वो सीधा कार देख पाता है फिर तुमने डीटी में खरीदा है वो पैसा। ठीक है। तो ये इन्वेस्टर जो लोग होते हैं बड़े बड़े, ये मोस्टली अपना पैसा जो होता है ना, कि बड़ा जो पैसा है वो डीटी में ट्रांसफर करके रखता है, कि ब्लॉकचेन में ये काम आता है इजी ट्रांसफर के लिए। ठीक है। अब उसके बाद में प्राइस स्टेबिलिटी, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट क्रिप्टो वोलेटिलिटी। अब क्रिप्टो की जो भी वोलेटिलिटी होती है, कि हाँ भाई बिटकॉइन मार्केट जल्दी से गिर भी जाता है, जल्दी से उठ भी जाता है। सेम ही इथेरियम, सेम ही मतलब जितने बाकी क्रिप्टो करेंसी है, वो लेयर वन लेयर टू जो भी है, थोड़ा प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है वो हमें बहुत आसानी से दिखता है उसमें, बहुत आसानी से। अभी प्राइस का फ्लक्चुएशन इन स्टेबल कॉइन्स में नहीं होता, ये बहुत स्टेबल। ये मूवमेंट देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हिलते हैं, बट उतना नहीं। वो स्टेबल एक ही जगह पे रुकते रहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं सेटलमेंट के, यूज्ड फॉर पेमेंट और एज अ टेम्पररी पार्किंग फॉर फंड्स। कि अगर बहुत सारा पैसा है, मैं बैंक में रखने से अच्छा मैं यूएसडीटी में रख सकता हूँ। या फिर मैं पेमेंट के लिए भी, मैंने जैसे बोला कि अगर मेरे को घर खरीदना है, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे को कार खरीदनी है, बहुत बड़ी है, मतलब मिलियन मिलियन डॉलर की कार है, मेरे को बड़ा बड़ा पैसा इधर उधर भेजना है, मेरे को एक जगह पे एक इन्वेस्टमेंट करना है, घर खरीदना है, मैं इंडिया में बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पास में आईएनआर में पैसा है, मैंने उसको कैसे भी करके यूएसडीटी में कन्वर्ट करा लिया। अब वो मैं इंडिया में बैठ के मैं वहाँ का एक बड़ा मिलियन बिलियन डॉलर का मैं घर खरीद लिया यूएसडीटी में, ना बैंक को पता चला ना गवर्नमेंट को पता चला, मेरे पास वो प्रॉपर्टी बुक हो चुकी है, वो मेरे नाम पे है अभी वहाँ पे, पर किसी को पता नहीं चला, किसी को कोई खबर नहीं पड़ी। अगर मैं यही बैंक के थ्रू करूंगा तो वो मेरे को 10 सवाल पूछेगा कि भाई क्यों खरीद रहा है तेरे पास इतना पैसा, दिखा पैसा कहाँ है, पैसा पैसा दिखा दो, तो फिर वो फोन लगाता है, हाँ ईडी भैया चले जाओ, वो ये करता है। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए आप सिंपल सिंपल, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो यूएसडीटी, ये स्टेबल कॉइन्स यूज करते हैं, क्योंकि ये सेम प्राइस, एक तो प्राइस रेंज सेम है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है प्राइस में। यहाँ पे $1 मतलब एक यूएसडीटी सेम सेम चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसके चक्कर में बस ये चीज कि आपको लॉ से बचा लेता है। ठीक है। लो रिस्क इंस्टीट्यूशन रेयर स्पेकुलेट ऑन देम, बट दे हेविली यूज देम ऑपरेशनली, हेविली यूज होता है। जो चीजें तुम नॉर्मल से नॉर्मल, एक समझ लो एक फाइनेंशियल फर्म है, ठीक है, बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, उनके डेली की इन्वेस्टमेंट होता है, फाइनेंशियल फर्म को साइड में करते हैं। एक कंपनी है, पकड़ लो माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है, मेटा प्लान कंपनी, एक कंपनीज है। एक कंपनी को कंपनी रन करने के लिए ऑब्वियसली दिन में बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, मिलियन डॉलर की, बिलियन डॉलर की, और उससे हो सकता है उससे भी ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। ठीक है। अब ये सारे ट्रांजैक्शन में हर बार बैंक से करो तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है, बड़ा बड़ा पैसा ऐसे ही कट जाता है और उसका नुकसान हो रहा है। मैं यूएसडीटी में करता हूँ, ना ही मुझे किसी को इंटरेस्ट देना है, ना ही मेरा पैसा कट रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ये स्टेबल कॉइन्स यूज करते हैं। अभी दूसरा आते हैं हम, स्टेबल कॉइन क्या है, टूल है, नॉट अ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट और फॉर इंस्टीट्यूशन, मतलब ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उनका, ये टूल है, कि रादर देन यूजिंग बैंक जहाँ पे मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, मैं ये यूज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा पैसा बच रहा है और मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। समझ में आ रहा है। ठीक। अब आते हैं चौथे इसमें जो है पेमेंट कॉइन्स। अभी पेमेंट कॉइन क्या होता है, पेमेंट कॉइन्स आर डिजाइन प्राइमरली फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी ऑफ्टन ग्लोबली विद अ स्पीड एंड लो कॉस्ट। ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया है कि तुमको पेमेंट करना है ना, तुमको किसी को पैसा बेचना है, भेजना है और लेना भी है अपने अकाउंट में, ठीक है, और वो तुमको सस्ते में भी चाहिए और फास्ट भी चाहिए, मैं मदद करता हूँ। उन चीजों के लिए क्या बने हैं, पेमेंट कॉइन्स बने हैं। अब पेमेंट कॉइन के एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, पेमेंट कॉइन के एग्जांपल है बिटकॉइन, एक्सआरपी, एलटीसी, बीसीएच। ये चार कॉइन है। ऐसे तो 20 से 30 एग्जिस्ट करते हैं, पर उनमें जो बेसिकली जो चार मेन कॉइन्स है उनके नाम मैं बता दिया हूँ, बिटकॉइन, एक्सआरपी, एलटीसी, बीसीएच। ये चार ऐसे मेन कॉइन है जो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, पैसा देने और लेने के लिए यूज किया जाता है, जो बहुत फास्ट और चीप में काम भी करता है। ठीक है। अभी जो इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो गया, फास्टर चीपर देन ट्रेडिशनल बैंकिंग, स्टोर ऑफ वैल्यू, बिटकॉइन इज ट्रीटेड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन।
Integration potential. Some coins like XRP work with banks and remittance services. Reliability. Payment coins are simpler, easier to understand, and more stable than speculative coins. समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिना बैंक की मदद के मैं क्रॉस बॉर्डर यहाँ से मैं यूके भेज दिया, यूएस भेज दिया, नाइजीरिया भेज दिया, अफ्रीका भेज दिया, चाइना भेज दिया, जापान भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बैंक की जरूरत ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, ये एक चीज हो गई। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू। बिटकॉइन इज ट्रेडेड एज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, कि तुम्हारा जो पैसा है, नेशनल का जो पैसा है, डॉलर है, आईएनआर है, ये है वो, सबके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, कोई कॉइन के बहुत ज्यादा है, कोई इसके थोड़े कम है। तो अब इनमें क्या होता है कि ये उससे बचाता है। अगर मैं इसमें वैल्यू स्टोर कर रख रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार आईएनआर एक डॉलर 89 का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पैसा डीटी में है, मुझे ये करेंसी एक्सचेंज रेट से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन पोटेंशियल। सम कॉइन्स लाइक एक्सआरपी वर्क्स विद बैंक। अब एक्सआरपी जो है ये बैंक के साथ भी काम करता है, ऐसा नहीं कि सारे डिसेंट्रलाइज है, काम करता भी है, पर उसमें ये नहीं कि आपके ट्रांजैक्शन वो दिखा, ये बस एक हेल्प लेता है। पेमेंट कॉइन्स आर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। जो भी बड़े बड़े पैसा मैनेज करता है, एक फाइनेंशियल फर्म होती है जो पैसा मैनेज करता है, इधर से उधर ट्रांसफर करता है, बड़ा पैसा इधर उधर मूव करता है, वो सब यही कॉइन यूज करते हैं, इसी कॉइन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिटकॉइन, एक्सआरपी, एलटीसी और बीसीएच। ओके, एलटीसी और बीसीएच के वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे, कितना वैल्यू है एलटीसी का। जो भी बड़े बड़े पैसा मैनेज करता है, एक फाइनेंशियल फर्म होती है जो पैसा मैनेज करता है, इधर से उधर ट्रांसफर करता है, बड़ा पैसा इधर उधर मूव करता है, वो सब यही कॉइन यूज करते हैं, इसी कॉइन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिटकॉइन, एक्सआरपी, एलटीसी और बीसीएच। एलटीसी का वैल्यू भी 68 के आसपास है यहाँ पे, कितना वैल्यू है एलटीसी का। दूसरा है बीसीएच, बीसीएच का वैल्यू ऑलमोस्ट 594 के आसपास चल रहा है, बीसीएच का वैल्यू। ठीक है, तो ये है हमारे पेमेंट कॉइन जो यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं पांचवे टाइप्स में, जो है यूटिलिटी कॉइन। अब यूटिलिटी कॉइन में कौन से आते हैं? बीएनबी, लिंक और एफआईएल। ये एग्जांपल है, ऐसे तो 30 से 40 है इस कॉइन के अंदर, ये यूटिलिटी कॉइन के अंदर, पर मेन जो है वो बीएनबी, लिंक और एफआईएल है। अब यूटिलिटी कॉइन मतलब क्या होता है? यूटिलिटी कॉइन्स आर टोकन दैट पावर्स प्लेटफॉर्म used to pay fees, access services, run smart contracts और participate in ecosystems। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है कि एक रियल यूज केस बता, हाई डेली एक्टिविटी ऑन प्लेटफॉर्म ड्राइव्स डिमांड फॉर द टोकन, revenue backed value, institution prefers token with clear real world uses, ecosystem growth, platform like Binance Chainlink continues to expand their adoption, and predictability demand, less speculation than meme coin, growth is tied to the platform success, obviously। यूटिलिटी कॉइन बेसिकली डेली डे टू डे अगर तुम्हें ट्रांसफर करना है, पैसा यूज करना है, तो तुम ये बीएनबी से ट्रांसफर एक्सचेंज यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि बीएनबी, एक चीज तो ये है कि रियल यूज केसेस बहुत है, अगर हाई डेली इन्वेस्टेड एक्टिविटी है तुम्हारी, इधर से उधर उधर से इधर, एक ये चीज इंस्टीट्यूशन प्रीफर करते हैं कि एक ऐसे कॉइन जो रियल वर्ल्ड यूज केसेस में काम आए, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया। मीम कॉइन कैसा है कि मीम कॉइन में कोई रियल वर्ल्ड यूज केसेस नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई कॉइन जो रियल वर्ल्ड यूज केस में आए उनके लिए रेवेन्यू बैक्ड वैल्यू है। इकोसिस्टम में ग्रोथ मतलब कि हर बार कुछ नया 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 चीजें वो ऐड अप कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक चीज मैंने बना के रख दिया, अब इसके अलावा मैं और कोई चीजें नहीं बना, ऐसे कोई बात। ये नई नई चीजें ऐड अप वैल्यू करते रहता है। वेलकम यूजर 177361, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। आ ही गए हो तो 2 गिफ्ट भी ले लो मेरे से। मेरे पास 2 गिफ्ट है, जो है एक है न्यू यूजर के लिए जिसको मैं 1 डोजकॉइन फ्री में देता हूँ, और दूसरा है अगर 20 डिपॉजिट करते हो तो मैं आपको 200 यूएसडी फ्री देता हूँ। ये मेरे 2 गिफ्ट है,
तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज मेरे से 2 गिफ्ट ले लीजिए। ओके, गिफ्ट भी ले लो मेरे से। मेरे पास 2 गिफ्ट है, जो है एक है न्यू यूजर के लिए, जिसको मैं 1 डोज कॉइन फ्री में देता हूँ, और दूसरा है अगर 20 डिपॉजिट। उसके बाद आते हैं 6 डिफाई कॉइन्स में। तो अगर आपको चाहिए डिसेंट्रलाइज कॉइन। अब डिसेंट्रलाइज कॉइन है फाइनेंशियल एप्लीकेशन है विदाउट ट्रेडिशनल बैंक, लेंडिंग, बोरोविंग, ट्रेडिंग एंड अर्निंग इंटरेस्ट। ये यूनी, ए वाई और एम के आर इसका एग्जाम्पल है। इसमें 500 से ज्यादा कॉइन्स है, बट मेन है इसके यूनी, ए वाई, ए वी ई एंड एम के आर। ओके, अब इसमें क्या होता है, इनोवेशन पोटेंशियल हाई अपसाइड इफ द पोटेंशियल इफ द प्रोटोकॉल सक्सीड्स, smart contract risk vulnerable to bugs and hacks, regulatory uncertainty still evolving legal frameworks, liquidity concerns, some DeFi coins are too small to trade a large amount, okay, safely। तो इसमें मोस्टली इंस्टीट्यूशन लोग नहीं पिक करते डिफाई में इन्वेस्ट करना। और लाकरी है मीम कॉइन। मीम कॉइन वो वाले कॉइन है जिसमें इन्वेस्ट करते ही नहीं है लोग, ठीक है। मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना मना है, मतलब इंस्टीट्यूशन लोग मीम कॉइन प्रीफर नहीं करते। इसी कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ मजाक के लिए बनाया गया है। इसमें कोई पैसा अगर आप डालते भी हो तो देखो, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें पैसा कमाते नहीं, बट इंस्टीट्यूशन के लोग क्या देखते हैं, वो ये छोटे मोटे चीजें नहीं देखते कि आज का फन नहीं देखते। वो देखते हैं कि मेरे को उस दिनों बाद, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं जो मीम कॉइन में नहीं। ठीक, तो मीम कॉइन के बारे में बात करना भी बेकार ही है। ये बस इतना ही बोल, कम्युनिटी ड्रिवन है, हाइप बेस्ड कॉइन है। हाइप आती है, मार्केट का प्राइस बढ़ता है, हाइप नहीं है, मार्केट का प्राइस गिर जाता है, ठीक है, बस यही। कोई इसकी रियल यूज केस नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई पेमेंट गेटवे कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फंडामेंटली नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाया गया। ओके, उसके बाद आते हैं गेमिंग। गेमिंग कॉइन में मेटावर्स कॉइन होते हैं, गेमिंग कॉइन होते हैं, लाइक सैंड है, माना है, एएक्स ऐसे, जो गेमिंग जैसे ब्लॉकचेन के गेम्स होते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड्स होते हैं, जो इन गेम एसेट होते हैं, वर्चुअल लैंड और रिवॉर्ड्स होते हैं, ये इनको थोड़ा सा हेल्प करता है, बैकअप करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इंस्टीट्यूशन में ऑब्जर्व दिस सेक्टर बट रेयरली इन्वेस्ट, रेयरली इसमें इन्वेस्टर जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनमें कोई इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो अच्छा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते इनमें, क्योंकि ये गेम बेस्ड है। अब जो गेमर कम्युनिटी है वही करते होंगे इन्वेस्ट इसमें, बड़े बड़े जो गेम, कुछ कुछ बड़े बड़े फर्म्स है जो गेम फर्म्स है, ओके, वो करते हैं इन्वेस्ट, पर मेजर जो बड़े बड़े फर्म्स है जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इनमें इन्वेस्ट नहीं करते। ओके, फिर उसके बाद है एनएफटी और क्रिएटेड इकोनॉमिक कॉइन्स, टोकन यूज्ड फॉर एनएफटी मार्केट एंड क्रिएटेड टू बाय एंड सेल गवर्न डिजिटल एसेट्स, ब्लर लुक्स एपीई। इसके अंदर 100 से 200 कॉइन्स है, पर उसमें इन्वेस्टर लोग फिर भी इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि इनमें कोई बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन नहीं है। ये बस एक आर्ट है, एक वैसे बोलते हैं कि हम अभी म्यूजियम में हम आर्ट वर्क रखते हैं, किसी की बड़ी लियोनार्डो विंची की, डा विंची की कोई बड़ी पेंटिंग्स है, उसे हम एक आर्ट का वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब ये सेम चीज एनएफटीज है, एक हमारे ब्लॉकचेन पे वहाँ पे बहुत सी ड्राइंग्स, आर्ट वर्क, म्यूजिक या ऐसी कुछ चीजें रिलेटेड यहाँ पे बनाई गई है, जिसे आप खरीद और बेच सकते हो, पर उसका कोई इन्वेस्टर का वैल्यू नहीं है, उसमें कोई फ्यूचर का वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही हंसी मजाक के लिए बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कॉइन थे। और उसके बाद आता है एक्सआरपी में, एक आखिरी कॉइन बता रहा हूं मैं, जो है प्राइवेसी कॉइन। प्राइवेसी कॉइन में आता है एक्सएमआर और एक्स ई सी, जेड ई सी, सॉरी जेड ई सी। ये दो कॉइन है जो प्राइवेसी कॉइन में आते हैं, जो बेसिकली प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी इन्वेस्टर लोग अपना खुद बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डू नॉट जनरली डू नॉट इन्वेस्ट इन प्राइवेसी, ओके। तो फाइनल जो मैं बात कर रहा हूँ, एक इन्वेस्टर लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन में जो है बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, यूटिलिटी कॉइन में जो है आपका बीएनबी और लिंक, और पेमेंट गेटवे कॉइन में जो है आपका एक्सआरपी और बीटीसी। ये आपके 3 टाइप्स ऑफ कॉइन है जो इन्वेस्टर लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स में, यूटिलिटी कॉइन्स में और पेमेंट गेटवेज में। ये इन्हीं कॉइन्स में इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है। Cool. तो इसी के साथ ही मेरा टॉपिक खत्म होता है आज का, एंड हम शुरू करेंगे लाइव ट्रेडिंग, बट एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ मैं।
अभी तक का एक थोड़ा समराइज कर देता हूँ मैं चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई इंग्लिश में, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझ में आए. So till now point what I've explained is my topic has ended over here. I've explained you my all my topic, but what did I explain in my topics? Okay, it was not just a basics for like what are stable coin, what is cryptocurrency, what is Bitcoin, what is Ethereum. No, it was not for that. My type of cryptocurrency was depending on investment of yours. No, investment of institutional people. Where do they invest? Where does an institutional people invest? In which coin they are investing? I've explained you one by one, step by step, all the cryptocurrencies, layer one, infrastructure ones, layer two, scalings, utility coins, payment coins, then your meme coin and blah blah, those coins which people don't invest. Okay, institutional people don't invest in those coins. They usually invest in what? Infrastructure coins, utility coins, and payment gateway coins. Okay, these are the three coins, cryptocurrencies which they invest in, which infrastructure is basically your Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, Cardano. Your utility coins are basically BNB, Link, and your payment gateway coins are basically Bitcoin, XRP, and two to three more. Okay, so these are the main coins which investor invest. This is my main thing for all of you people today, that my topic was which are those investors, institutional investor investing in which coins, and you are investing in meme coins. Do not invest in meme coins. What's the point of investing in meme coins? It's not going to give you any value, any profit. Invest in those coins which has a very use cases. What do we learn from this? That all the coins which is getting invested by the institutional investors are very strong coins which has real use cases, long term investment, and not just any coin which is made 1 day ago, 2 day ago, 1 week ago. They are investing in such coin which is going is there in the market for longer and longer and longer period of time. Okay, so please make sure to invest in such coins, all those which I have mentioned in this my today's topic. And now I'm going to take a small break. After this small break, I'll be back and we will do live trading. Okay, now live trading will start soon. I will start giving you trades. I will do some market analysis and every of those things, and we'll discuss what kind of trades can we take today. Yesterday I earned $168.23. Today I will hope that I will earn more than that. Okay, so if you want to earn such kind of profits from me, $168.3 yesterday I made. If you want to earn such kind of profit, then stay on the live stream. I will come back very soon. Till that point, what you need to do, as we are starting our live trading, if you don't have money to trade right now, only click on the deposit button in here. You can clearly see this is a deposit, live stream deposit button. Click on this and start investing, start depositing. Soon I will come and we will do a trading. Okay, bye bye, I will come after small break. Don't have money to trade right now, only click on the deposit button in here. You can clearly see this is a deposit, live stream deposit button. Click on this and start investing, start depositing. Soon I will come and we will do a trading. Okay, bye bye, I will come after small break.
Welcome back. Welcome back. Before taking trade, let's just see our overview of our market, where the market is heading, where the market is going, and every of those things. Okay, before entering in any kind of market, Bitcoin is going slightly up. You can see 0.5%. It was 0.3. Ethereum is 1.15% up. Recently, it was just 0.3, but it went up 1.15%. Ethereum is having a growth. BNB is having 0.5%. XRP is having 0.23%. Okay. Solana is the only coin which is still down. Other than this, Ethereum, BNB, XRP, and Bitcoin are still up. Fear greed index is still showing fear. So, what do you mean by fear greed index? In analyzing the people's investment strategy, the way the investment inflows and outflows, understanding every of those things in overview, this fear and greed index tells us about like 35 is the rate. It goes from 0 to 100. So 35 is a fear. That means still the market people are going for not investing in the investment or taking out their money. That is suggesting 35 fear. Altcoin season 29 out of 100. It's just 29. It's not much. And then coin market index 0.05% is up. 20 index. Okay. Coin market cap is right now at 3.02 trillion. It is down. It is used to be on 4 or 5 trillion, no, 4 trillion before. Volume today is just 100.29 billion. It's not much of a volume. Bitcoin's dominance. Bitcoin is 59.2%, Ethereum is 11.8%. Other volume today is just 100.29 billion. It's not much of a volume. Kind of. I was gone for a minute, right? What's happening to the network? Am I visible to you all people very clearly? Because I can see some network issue happening over here. So again, it is back with a strong thing. I was gone for a minute, right? What's happening? Okay. Okay. So open interest perpetual, we are able to see that in the perpetual contract there is 594.5 billion invested and future is 3.61 billion. Volume X implied volatility, Bitcoin is 39.65, which is high. Ethereum is 57.07, which is again a little high. Okay. The net inflow, the net flow. Let's talk about spot market. Today's spot market yesterday was 0.03.02, which is okay. Last week was 0.23 trillion. Straight it came down a little low, a lot low. Okay. After that, number of cryptocurrency. Solana is huge. Cryptocurrency chain which is being used right now a lot. 50, almost 50% is Solana. Very small is Sui. Base Ethereum is just here. Very less. Bitcoin treasury. Always keep a track on these numbers. Okay, always. Strategy. It was 6 lakh. They added more. 7 lakh it has become now. It was 6 lakh 87,000. They added more. It became now 7 lakh 9,715. Rest of the people, you should always make sure to check all these people's holding, how much holding they are having and everything. Okay. Crypto Bitcoin ETF. IBIT price 50.7.
iShare, Fidelity. This ETFs are also important for you to check. The volume is 2.44 billion, 69.38 total, market cap 69.72. Premium is showing us that 0.26% is little down, but that is totally fine. Okay, doesn't matter much. Fidelity $77.72 price. Uh, that doesn't have that much of things. Okay, okay. Main is IBIT only. This is BlackRock CEO's funding platform. Okay, BlackRock CEO's funding platform is IBIT. Total liquidation till now point in 24 hours we have lost 293.37 millions are gone from the market. Total amount is how much gone from the market. Total liquidation is in short trade. Okay, in short trade we have lost 203.52 million. As the market is dipping, the people whose investment was down, they have lost their money. Total amount in 24 hours sum up is 203, which is lost. In long, 89.83 money is there. Okay, but lost money is total liquidation. Top liquidation event all the time in 10th of October, threatened by 100% tariff on China. 19.16 billion was lost at that time. Okay, all these things investment, like you can track on the, yeah, you can track on all the newses which is happening, and due to which you can clearly see how market liquidates. Other thing which I want to see is just main articles. Like if we go on cryptocurrency, I just want to see any main articles. Category, dashboard, articles. Clarity Act slammed around days, says Coinbase Bank win while DeFi dies. Okay. India bans Monero Gcash dash over money laundering fear. Okay. McLaren step foot into Web3 with Hydra partnership with revolutionary fan experience. Rumor JP Morgan clash Chase maybe quietly build exposure to XRP. Bitcoin flirt with, okay, let's see, the strategic allocation to the real asset, a technical analysis, inflation. I want to see a main major news. This is the only major news which I feel which we should be focused on. Okay, Aaron Day, a chairman and a CEO of Daylight Freedom Foundation, slammed the Clarity Act. The Clarity Act was announced at the Davos meeting. Okay, the Davos meeting, which happens for the World Economic and every of those things. In there, when they were talking about the this thing, cryptocurrency, as the new laws are gonna come, in which was Clarity Act. Now the Clarity Act is giving more power to the banks rather than the DeFi. The cryptocurrency was a blockchain which was not related to the banks. Okay, it has very far. It should not be related to the bank. Bank should not get powers, but this thing is giving the power, in which we can see Aaron Day, the chairman and CEO of a Daylight Freedom Foundation, slammed Clarity Act as a Senate crypto bill as worse than the Patriotic Act in the term of surveillance during a recent interview on the poll. They argued that no crypto legislation, legalization, basically legislation is needed. Self custody has worked for 16 years without Congress stepping into it. Real fight, he said, is not crypto versus bank. It is large exchanges like Coinbase lobbying for rules that block smaller competitors. Okay, like us. What bill actually includes? The proposed legislation packs in real-time trade surveillance, 5 years transaction record, rent retention, data sharing with the foreign governments, and emergency freeze power over user funds.
which is very wrong. That Clarity Act is basically giving the bank and the government more power over us. It can give a power emergency freeze over any user's fund. User, not exchange. Understand this one. User. Data sharing with foreign governments as well, which should not happen. Okay. Welcome user 289034. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part. Thank you so much for coming down. What bill actually includes is the proposed legislation in just a second. Okay, just a second. So as we can see over here, the bill proposed legislation backs the real-time trade surveillance, where every trade will have a real-time surveillance, like where is the trade taking, how much money is getting investment, how much money is getting going out in the market. That surveillance plus 5-year transaction record retention, like they can track up to 5 years of transaction will be hold by the surveillance basically, and data sharing with the foreign governments, which is again sharing with the government, sharing with whatever activity you are doing, wherever you are transferring, and everything will be shared with the government. Basically, again, the same thing is what happening. The main purpose of cryptocurrency was what? The main purpose of cryptocurrency was that no government, no bank will have any interference between the blockchain. By this act, the blockchain is being giving some part of surveillance, some part of control to the bank and the government. Okay. And emergency freeze power over the user's fund. Okay, like if we see some by surveillance, we see some money laundering, some terrorist funding, or whatever it is, and they have an emergency freeze power that they can freeze the user's fund, that you cannot access it for till the time that it becomes unfreeze or something. Okay. they flagged uh, they flagged something most crypto holders missed. Treasury already dropped the cash reporting threshold from 10,000 to 200 in 30 zip codes across California taxes. This happened through a memo, not a vote. Okay. And the original 10,000 limit was set in 1970, adjusted for the inflation, that would be $80,000 today. Follow follow the money. They named the real winner. If this bill passed, bank traditional like basically traditional custodians, Coinbase, and the circles, not DeFi small projects and not the retail investors. These are not the one who is gonna have any use, any benefits from this act. The one which is gonna have a benefit is the banks, traditional custodians, and Coinbase, like the big firms basically. Nobody paying me to oppose this bill. There is no money in it, he said. So you have a massive machine with media, crypto media, that align with wanting outcome of this because they are they are directly benefit. Okay. History repeats, they want that protective limits on legislations in never state limited. Legislations is basically that enacting, like this is gonna get imposed now. It is not imposed, but it's gonna impose, like a process is called legislations. Okay. Income taxes started at 1% in 1913. Within 5 years it is hit 77%. The Patriotic Act was sold as a total against foreign terrorists in 2021, and by 2023 it was being used in a domestic drug cases as well. Okay.
Welcome user 292772. I am just discussing regarding a Clarity Act, how it can make a very drastic changes in the market. Clarity Act is not supposed, like, it is used for the giving power to the bank, surveilling your tracks, your trade, and giving them power to freeze your accounts as well. DeFi and self custody under the threat. Day predicts if this bill passes, Coinbase could eventually get bought by the JP Morgan Chase or BlackRock. He expects DeFi to be killed either immediately or through the future rule change once the framework is in the place. Expect, like, basically DeFi would be get killed. DeFi is basically no control of the government and the bank. If this law gets passed of the Clarity, then basically what is happening is the bank and the government is getting control over the Bitcoin, which was the first major why cryptocurrency was made. It was made only because of that bank and the government has no control over it. Okay, so maybe after this law is getting passed, we may see a very huge drop down in the crypto market for the Bitcoin as well. And that's the one thing which I have told you a lot of people. If we see one thing, if we see one thing in a day time frame, a bearish a bearish pattern is forming over here. A bearish pattern, a bearish flag pattern is forming, which will lead us to an extreme downfall of the market after this act comes, because this act is straightly gonna be a big slap over the investors, a big investors who are investing money, like, in thinking that cryptocurrency blockchain system is not related with the DeFi, not related with the blockchain, sorry, not related with the banks and governments. That's the one reason why big investors, that's the one reason why cryptocurrency got so much attention and investment. Now, if banks and government gets linked, the investment may go out of the market, and that one thing will make what it will make the changes, and that change will be a drop down of the market, which we can clearly see what's happening. A bearish flag pattern is forming in the 1 day time frame. I told you day time frame chart patterns are very important. You can clearly see this was the like almost 1000, yeah, 25 chart pattern, in which you can see that a bearish flag, bullish, sorry, this was a bullish flag pattern which was seen. Breakout made the market touch to almost all time high. Now same pattern is forming over here. This is the pole, this is the flag, and it can fall more down up to maybe, let's say, 79 to 78 price maker after this law get imposed. Till now point, it just a talks are there. Okay, so this is very huge news of the Clarity Act slammed. Says the Coinbase bank wins while DeFi dies. Basically, banks and governments are winning, DeFi is dying. Okay. Other than this, what we can see, India bans Monero GK. Like, let it be. Like, these bans are just for like money laundering things. There was just one big news which was, which needed attention. Other than this, I don't think so it need any kind of attention in the market. Okay, everything is discussed. Now let's just head toward trading. We'll see what kind of trading we can take in the market today, what kind of trade we can take in the Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, or some small coin as well. We'll see which coin we can trade on, and once we have decided, we will take a trade in those coins. Okay, simple. Welcome user 2834. Welcome user 602452. All the people who haven't joined my Telegram channel till now point, please make sure to go on the more option and correct. Go on the more option over here, and then you can see this join Telegram group fans. Join this group because this group will talk about all the crypto market update. I give you trades in that as well. You can clearly see this was my yesterday's profit, $168.23. That was my yesterday's profit. Okay,
Please user 602452 and user 509688. I request you all people, and also user 292772. I request you all people to please join this live stream group which gives you all the updates. Okay, now let's move and let's see what kind of trade we can take. Yesterday I gave you one we did resolve USD trade actually yesterday. I can show you over here. This was the two trade which I have taken. Can you see? One was $125 plus, another was 42. If you combine those, add those, it will become $168.23, which profit I earned yesterday. Okay, this was the two trade which I have taken. All were for the long trade. We had a long, and then after that market is falling now. This was the two trade which I have taken. Can you see? One was we achieved our long profit, and after that market fall. Okay, not that much, but yes. Now $168.23, which profit I earned yesterday. Also, I gave you a trade of XMR. I hope XMR trade. Okay, till now point XMR trade is not there. Welcome all users. Welcome, 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 welcome. Not that much, but yes. Now soon we will take XMR trade. Also, I gave you a trade of XMR. See, there is no point in investing in Bitcoin right now. Trade in Bitcoin is no point right now because there is no movement in the market. When there is no movement in the market, there is no point of taking a trade even. Okay. So we'll go for, let's search for some different coin. Any coins which is like trending right now. There is no point in investing in AI feature. Always make sure, see, this is the option. If you do, if you guys are very new to Zbit and you don't know about this, I will just give you one advice. Like, come down and go on AI featured. Okay, AI featured is basically that coin which will give you the most valuable coin at this point, which can help you earn a good amount of profit. ZRO USDT, you can clearly see it is like 151% already up. Preference is short. IP USDT, KAIA USDT, DYDX, AX, SU USDT, SPX USDT. So these are the top coins which are, they are saying that we should go for like some changes. Let's see one of those coins, IPC. Let's go for IPC. What are the changes in IPC? IPC is the Internet Computer Cryptocurrency launched by 2025. Internet Computer supply. A lot of you supply it has. IPC USDT. Let's see IPC USDT. ICP USDT. It is trading at 0. It's trading at 3.5. Okay, 3.5, not 0.5. My bad. Trading at 0.5, 3.5. What kind of trade can we take over here? FPG, fair value gap. Four-hour demand zone.
This is a 4-hour demand where the market may travel to. Day time frame, what do we see? Same day time frame demand is also the same thing only. Okay, there is no big difference. It's just I can drag it a little up. That's all. This is a 4-hour straight downfall. We can clearly see from the supply, market is right now traveling to where? Demand. Okay, our demand is where? This is our 4-hour demand, which is basically valuing at 3.260. Consider as a 3.260. The market is traveling to 3.260 from 3.5, 3.260, somewhere around that market is traveling to. Our demand is where? This is our 4-hour demand, which is basically valuing at, okay, 4-hour fair value gap also I should. The market is traveling to 3.260 from first market tapped into this somewhere around that market is color. Okay, 4-hour fair value gap also I should. This is 4-hour fair value gap, which we can clearly see that this candle came exactly at the fair value gap, from there taken down. Right now we are able to see a little market is trying to go. We can see clearly see a support trend line over here, and this trend, sorry, so this support trend line, we can clearly see that a market is trying to reach again. It will, I think, like it will possibly tap into again the fair value gap, and from there it will start falling. If it start falling, the target is our 3.250. If it's going up, then our target is simply 3.587. Okay, let's just see in the 1 day 1 hour time frame what is a suitable distance for us. Why my this is not forming? 3.250. If it's going up, then our target is simply 3.587. Okay, let's just see in the 1 day 1 hour time frame. Why? What is a suitable distance for us? Why this is not forming over there? It is at 0 3 point. 3.89, 3.589. Why? Why this is not forming over there? It is at 3.589, 3.89. Okay, 3.89, 3.589. We are having a small fair value gap over here, but according to 4 hours, fair value gap is right over here. There is no previous fair value gap in according to 4. But in a 1 hour, we can see one small fair value gap over here, and this is a 4-hour fair value gap. The main 4-hour, why it is not forming, and like what's wrong? We are having a small fair value gap over here, but according to 4 hours, fair value gap is right over here. There is no previous fair value gap in according to 4. But in a 1 hour, we still can not forming fair value gap over here, and this is a 4-hour fair value gap. The main 4-hour, why it is not forming, and like what's wrong? 3.25. 3.25. Okay, it came now. That also came. I don't know. This is our trade over here. For a short time, we can go for a buy trade, which can go till the fair value gap for a short time. Second trade is our a short trade once this support trend line. We can clearly see support trend line, right?
Once this support trend line gets break, we can go for the demand zone, which is the straight up the target of 3.250. Okay, two targets, two trade I'm giving. If this support line gets broke by down, target is this. This is the target 3.25. If it doesn't, if it start to go above, then our target is this. This is my target, which is 3.589. Okay, target for above, target for below. Target for below will not be achieved right now, as we can clearly see support trend line is not yet broken. Once this support trend line is broken, then and then only we'll go for it. Okay, 3.589. I think we should go for target for below will market order 50, 55%. No, limit order we should go for, I feel. I think we should go for market order 3.518, 3.51. No, limit order we should 3.7. I want to put limit order because obviously it can come 3.518, 3.518, 3.518. Yeah, USDT 20%, not much. Cross isolated, leverage a little high, 30, 30x of leverage, 3.51. Let's see. My trade will get active 515. It has 518. It will soon get active. Okay, so that's the trade which I've given to all of you people. At right now point, I really believe we will go for a buy side. My trade is still not active. Okay, at the price of 3.515, my trade will get active. Okay, at the price of 3.151. Right now it is at 3.520. It has to come more 0.015, which it will come. Till now I'll just delete the rest of the stuff. At the price of 3.151. Right now it is at 3.520. It has to come more 0.015, which it will come. Till now I'll just delete the rest of the stuff. Okay, in the IPC, ICP, USDT, I'm going for a long trade, and on my target I'm keeping is very small, not a big one, just 3.589. That's the target which I'm keeping. But my entry, I put a limit order entry, which is at 3.515. Till right now point, market is not at 3.515. Okay, so my trade is not active, but my trade will get active. But my entry, I put a limit order entry. More little 3.515. A little more drop and my trade will get active.
Okay, just a little more, very close to tap in my price. 0.5, a little more step down, and my trade will get active. You can clearly see the price over here is 0.3.518. I need 3.515. That's my price which I want to enter in the market, right? You can see it. More down a little. 3.515. Okay, it came to 3.515, but it did not take my order. Why? Again, it came to 3.515. Take my trade, bro. Why my trade is not getting placed? Market is at 3.15. My price is at 3.15. My trade should get executed. Why my trade is not getting executed? Why my trade is not getting executed? This is the price where I entered, right? This is the price. My trade should get executed. Why my trade is not getting executed? Okay, it executed now. Cool, cool. My trade is executed over here, so I will put this thing as well. Like I can be wrong as well, but I'm really thinking that we can go up. 5.5. This is my value over here. Stop loss I'm gonna keep very small, not a big one. And this is my target. Let's see. Let's see what kind of market possibility we can get. Target 3.589. 3.589. It's basically target 3.5 ICT USDT error. That's we are $2 minus right now point, but that is completely fine, completely okay. We are $2.8 minus. In the starting there will be something like this, okay, in the starting, but we don't have to fear by this. It is okay. How much is this? In the starting there will be something like this. 2% market we can capture. It is okay. Market falling is just basically we could have entered in a much more cheaper value. Much more cheaper value we could have entered. That's all. Doesn't mean anything else. Just put my trigger. Fine. Fine. Market falling is just basically we could have entered in a much more cheaper value. Much more cheaper value we could have entered. That's all. Doesn't mean anything else. One trade on this. Other trade I wanna see which are those, which was the coin? It was ZR was minus 10%. Absolutely, why not? 4 hour.
Okay, this is a very good entry for me. Overall demand zone as the place where the market will travel. Little small rejection and I can enter. How much percentage is still left? This is a very good entry for me. Good percentage in left. Overall, 50%. I will take this trade here. ZRO. Access it to at least the amount I wanna use. 41. And let's go for short order placed. Okay. Two trades. Take two. ZOR. What was the mark price I entered? Was entry price 2.07. 8. Somewhere. Not a long, it's a short trade. Okay. 1.9552. 1.9552. Get 1.5. 19552, right? Okay. This is what? ZROUSDT future dot slash. Okay. This is one over here, and why it is? Because it is traveling from supply to the demand. That's the reason. This is basically our
4 hours of demand. 4 hours of demand zone. What's happening to my ICP? ICP is crashing down. Gap down opening, with a gap down opening, it is crashing down. There has been a gap down opening over here. Intriguing. There are zero zero USDT is in a profit. Not much, but it is in a profit. Why is in profit? Other one is in a loss. Shall we close the ICP trade? Shall we close this trade? But I have hopes that it will touch the target of 3589. The gaps will, there is a small gap over here, right? It is coming down to fill the gap. There is a small gap over here. Can you see there is a gap up over here? It will come and it will tap and it will go away again. I should have noticed the gap before. I would have put my entry at this point itself. If the people who have not yet entered, you can enter at this point because there is a gap between. That's why market is coming down to fill this gap. Can you see a gap over here? This is that gap which market is coming down to fill. Plus we can check some strength. If there is a strength in the market, any sort of divergence. Yes, big one. Strength is increasing, market is falling. We are gonna have a shoot up. There is an RSI divergence as well, which we can clearly see. Market strength is going above, price is falling. Early sign of a bull market, early sign of the bull market. You can clearly see this is exactly place from where price is falling down. I don't like these indicators. Let me just delete it. Okay. Can you see a price is falling down? This is the price falling down, and in the RSI, price is going up. This is called as diversion, early sign of a big breakout. Market will give you a big breakout. Let me just fill the gap and then we will enter. I feel we should enter from the bottom now, as it is already had came till this point. Let
me just close the trade over here and let me just enter from somewhere around here. How is Zaro doing? Zaro is still up. Not much, but still up. $3 profit. ICP is the most anticipated right now for me. Big divergence strength, obviously it will go up. Will not travel to the demand at right now point. I don't think so it will travel to the demand at right now. Let me cancel this trade. Don't close. Just close this one. I just want to close this one. Close. This was a long trade, right? Close long. PC 100%. Close long. That's all. Don't close anything else. Just close long. Now put the limit order at this value. 3.481. 3.481. I want to go for limit order 3.48. One 20, not in IPC, I don't one size in IPC. We are at $20 profit actually in Zaro. Zaro, we are $20 profit. Can we see profit? $20 profit we are in Zaro. But I want to invest in ICP as well. Because such kind of divergence should not be missed. If you found a divergence, then take advantage of that divergence. Current position. I want to buy a limit order. Change it to classic mode. Mountain University, not much. I want to invest just
86% works with me. Open now. Placed. Cool. Till now, our order is getting placed. We'll just observe this. What's my profit in here actually? Target is 1.9552. PP 1.9552. 100%. 242. Confirm. $22 profit till now point. Okay. And the other one, I have placed the order of other one, but let's see if it gets open, because I need the market to come down to 4.48, 3.481 market should come down to. $17, $16. Suddenly there is no strength in the market. Why am I understanding? It is in the it is nearly to the overbought situation. But that is fine. Strength will come. $20 profit till no point. $22 profit. Let's go, guys. Take a trade in ZARO USDT future short and sell trade. Target is 1.9552 over our demand zone. This is the trade. This is it. $23, $25 profit. Let's go, guys. This is it. Sorry. $31, $36. Let's go. Good amount of profit. Take a trade right now. $35 profit. $35. $35 profit. $36. Looking good, going good. It's very easy to earn money from the market if you just know supply, demand, fair value gap, some support trend line, some chart pattern formation. That's all you require to earn profit from the market. Nothing else. Such see.
$37 profit till now point, $40 profit till now point. Please make sure to take an entry in this market. $38 profit till now point. We have achieved 41. I'll just share it in a group. And don't forget to take entry because then they save this image. Save. Let's send message. $36 profit. $33 profit till now point. Let's see. Welcome user 203368. Please don't forget to take a trade in Zero USDT future short sell. Till now, I have achieved $36 profit. Till now, I will achieve more. Target is 1.9552. That's the target. Nine five nine five. Target, let's go for 1.9595. कोई भी डाउट है, कुछ भी सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में. कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो. $34.36 USD till now point. 36. $35. $37 profit. Slowly it will grow. Okay, we don't have to worry regarding that. This trade is gonna touch, maybe today it won't touch, maybe tomorrow it won't touch, but surely it is gonna tap the target of 1.55 1.9552.
because that is a day demand zone. Here I will show you people this thing. This is a day demand zone which market is traveling to specifically. What is this one? But there is a gap at 185, and this is if you look at 4 hours, this is a 4-hour demands, 4-hour demand zone, small demand zone of 4 hour, which we can see over here. Okay. I'm really hoping that market is traveling to exactly at that place. Till now point we have achieved how much? Till now point we have achieved $43 profit from the market. Till now point $43 profit, $44 profit from the market we have captured. 48.4 dollar profit till now point. A good amount of profit we are achieving. $49.50 profit inside the market. $51 profit we are having right now inside the market. $49, close to $50. $41 profit till now point.
$48. $48 profit till now point. $53 profit till now point. $53 profit. The trade is going very, very good. The trade is going very good. $53 profit. 52. The movement will, the price movement will never go straight down, 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 down like this. It will always move a little up, a little down, a little up, more down, such kind of way. Okay. $55 plus, $55 profit till now point. $55. 57, close to 60. Let's hit 60.
59, and that's it. 60. We have hit our 60 right now. $60 profit we have hit. $62. $63. $66. From here it should start going up. $71 profit. $72. $72 profit till now point. $72 profit. You can see P&L over here as well, P&L over here as well. Both side you can see $73 profit till right now point. 75, 78. Let's go 80. And that's 80. वेलकम यूजर 602452, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम। अभी मैंने ट्रेड लिया है ZOR USDT में फ्यूचर शॉर्ट सेल, $78 का प्रॉफिट हो चुका है अभी तक। आप भी जल्द से जल्द ट्रेड पे क्लिक करके ये वाला ट्रेड लीजिए ZRO USDT में। इसका टारगेट है 1.9552, ये इसका टारगेट है। अभी तक $78 का प्रॉफिट हो चुका है मुझे, और ये मेरे कल का प्रॉफिट है। $168.23 ये मेरे कल का प्रॉफिट है। आज का ये ट्रेड चालू है, ये आज का ट्रेड है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड चाहिए तो प्लीज मेरा ये लाइव स्ट्रीम का ग्रुप, यहाँ पे भी एक और ट्रेड चालू है मेरा, ठीक है। ये मैंने IPC USD में ट्रेड लिया है। यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड चालू है। एक मेरा चालू है ZRO USDT में, और एक मेरा ट्रेड चालू है IPC USDT में। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 4.6 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। एंड ऐसे ही सारे ट्रेड लेने के लिए प्लीज ये मेरा लाइव स्ट्रीम का ग्रुप है। यहाँ पे जरूर ये डिपॉजिट बटन पे क्लिक करके, डिपॉजिट नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, ये मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे मैं सारे ये ट्रेड वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। हर एक ट्रेड वहाँ पे पोस्ट होती है। जो जो ट्रेड आपको लेनी होती है वो ट्रेड यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज ये टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको एक ट्रेड कैसे करते हैं ये सब चीजें समझ में आएगी। 81 का प्रॉफिट हो चुका है। एंड इधर भी हम चेक कर लेते हैं, हमें IPC कहाँ है, हमारा IPC फ्यूचर ट्रेड। IPC का प्रॉफिट हो चुका है 5, ठीक है। यहाँ 5 और यहाँ 87, ठीक है।
टोटल यहाँ पे 92 91 का प्रॉफिट हो रहा है हमें। एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये। $88 का प्रॉफिट हो चुका है। $90, यहाँ पे 95। आईपीसी हमारा चालू है $4.66 के प्रॉफिट पे, और ये चालू है हमारा $88 का प्रॉफिट। दोनों हमारे ट्रेड प्रॉफिट में चल रहे हैं। भाई भाई एस्टिमेट पीएनएल ऐसा क्यों दे रहा है मुझे? 86। ट्रेड बैक टू 21। सडन डिमांड फ्रॉम हियर। पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सडन डिमांड फ्रॉम हियर, वी आर एट 21। 80 पे थे, 21 पे आ गए क्योंकि एकदम से मार्केट में एक बड़ा सा रिजेक्शन हो चुका है, जो ठीक है, इतना कोई मायने नहीं रखता है। अभी हम हो चुके हैं माइनस में, -1। बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये चीज वापस से नीचे गिर के फिर वो वापस मुझे 80 20 30 डॉलर का प्रॉफिट देगी ही देगी, कंफर्म। ये थोड़े टाइम का जो ये सडन ग्रोथ होता है, सडन प्रॉफिट होता है, ये इतना कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है। अब यही सेम चीज आप जहाँ पे अभी देख रहे हो, मेरे को -$15 का माइनस हो रहा है, ये सेम चीज आगे आगे 15 20 मिनट में फिर से इसके भी नीचे जाके मुझे 100 200 डॉलर का प्रॉफिट देगा ही देगा। आप देखते रहो, बस देखते रहो। आप देखते रहो बस उसे। वो फिर जाके यहाँ पे आ जाएगा मार्केट, फिर यहाँ पे इसके भी नीचे आ जाएगा। अभी देखो वापस रिजेक्शन हो रहा है, वापस रिजेक्शन हो रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है। ये थोड़ा बस ये क्या है कि वहाँ पे कोई एक ऑर्डर था, लिमिट ऑर्डर बड़े पेमेंट का, जो एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होते सही वो एकदम मार्केट ऊपर चली गई। ये जब ऐसे वाली मूवमेंट आती है ना कि एकदम सट करके ऊपर चली जाती है, ये कोई नहीं है, ये एक लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, इसके पहले के लिमिट ऑर्डर जो बाद में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम प्रॉफिट में आ गए, फिर हम $9 के प्रॉफिट में आ गए, और ये वापस से अभी नेगेटिव में भी चले जाएगा, ठीक है। फिर से हमें एक रेड कैंडल बनती हुई भी दिखेगी मार्केट के अंदर। इन ये जब ऐसी चीजें होती है ना, तब टेंशन नहीं लेना है, बहुत कामली रहना है। तुम्हारा जो टारगेट मैंने बताया है वो टारगेट हिट होगा ही होगा, उस पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम फिर प्रॉफिट में आ गए $17 के प्रॉफिट में। अब ये सेम प्रॉफिट जहाँ पे हमारा कितना चल रहा था, $80 का प्रॉफिट चल रहा था, अब ये सेम 15 वापस से ये 18 तक बन जाएगा सेम। बस सब्र रखो और कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट सप्लाई से गिर के ऑब्वियसली डिमांड के पास ही जाके गिरेगी। बिना डिमांड के पास से मार्केट नहीं उठने वाली कहीं, ये डिमांड के पास जाके ही मानेगी, ठीक है। और सारे के सारे लोग ऐसे ही ट्रेड पाने के लिए यहाँ पे होम पेज में जाके ये मोर ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप देखते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं आपको सारी ट्रेडें देता हूँ, ठीक है। फिलहाल में ये ट्रेड चालू है, फिर हम आ गए $44 के प्रॉफिट में। अब ये सेम 44 वापस 80 हो जाएगा। आपने देखा ही, लाइव दिखाया मैंने आपको, ये ऐसे मोमेंट पे कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी पैनिक होके ट्रेड को क्लोज करना नहीं है, ठीक है। whenever such thing happens, suddenly you saw my market was at 80, from 80 suddenly market went up over here,
and it gave me almost $17 minus it was going on. But again, they are back in the track, $44 profit. Whenever such thing happens, never get panic. Never close your trade in the panic state. Never. Okay. My market was at 80. From 80, suddenly market went up over here. And it gave me almost $17 minus it was going on. But again, we are back in the track, $44 profit. Whenever such thing happens, never get panic. Never close your trade in the panic state. Never. Okay. $39 profit. We will close our trade in profit only. Okay. It will hit the target of 1.9552 for sure. $39 profit. We will close our trade in profit only. Okay. It will hit the target of 1.9552 for sure. Again, the same thing is happening, but we don't have to worry. We just have to understand that this is the demand and it will come there. That's it. That's it. Nothing else. This is a fair value gap in between if people can observe. We just have to understand that this is the demand. $16 come there. That's it. That's it. Nothing else. Robonoski. Do not forget to do the deposit, guys. Make your first deposit in the live stream and gain one Dogecoin completely for free of cost. Okay. Do not forget this thing. Deposit one Dogecoin and earn, sorry, deposit minimum 3 USDT. Simply just click on the deposit. There will be fiat transfer. Click on that and put 300. That's all. 300 INR. It will give you how much? It will 300 INR will give you $3.26. Deposit that, take a screenshot, share it to me in the Telegram group. We have created a Telegram group. Yes, in that, send a screenshot with your UID. I will transfer you one Dogecoin completely for free of cost. This is a one gift. Other gift is if you do a deposit of 20 USDT in my live stream. Can you see a gift option over here? To click on this, there is a, yeah, can you see deposit 20 and claim how much? 200 USDT. 10 times bigger, 10 times bigger thing which you are getting from. If you just simply, where is it? Where is it? Where is, yeah. If you just simply come on this deposit option, click over here and deposit 20 USDT. I will give you 200. That is 10 times bigger money to take the trade. That 220 USDT you cannot withdraw from the market. Okay, I will tell you that one thing very seriously, that you cannot withdraw that 200 USDT. But what you can do is take a trade with that. And once you take a trade with that, it will be very helpful for all of you people. 200, that is 10 times bigger money
to take the trade. That 220 USDT you cannot withdraw from that. Whatever profit you earn from that 200, you can withdraw it as well. Withdraw that 200 USDT. But what you can do is take Let's a go. Trade with that. And once you take a trade with that, it will 19. So it's my time to leave this live stream. I'll see you guys tomorrow, same timing, 12 to 4. Okay, that's my timing. This trade will get completed. Do not worry about this trade. And I hope you all people understood regarding today's topic, which was which are those coins institutional people invest in. I explained you everything from categories, infrastructure coins, utility coins, payment coins, and there are the rest of the coins which we don't need in the for understanding. But those main coins which people invest, institutional people invest, I told you in today's live stream. So please, if you haven't watched it, just scroll back and watch all those coins which I mentioned and take a trade on those coins, invest in those coins because institutional people invest in those coins. And one thing at right now point, don't go for major investment for a buy side in coins. Okay, in spot I'm talking about. Your spot coin investment chance will come to you very soon because market will dump more soon. Soon market will dump more because of the Clarity Act. The Clarity Act, which is going to get imposed very soon, is regarding involving bank and the government to the blockchain system. And that one news will be very bad news. It will make a very negative impact in the market, which will make it drop. Okay, so soon a little market may drop, and that's why I can also, I already told you regarding this one thing, that I can spot a bearish flag pattern on the day time frame in the BTC. You can go and check out as well. Okay, so I'll leave you guys. Thank you so much for joining this live stream. Thank you so much for being a part. I'll see you all guys tomorrow, 12 to 4. I will bring some new topic for all of you people, maybe explaining you regarding why Clarity Act can make a dump in the market, what can go wrong, and every of those things. Okay, so I'll see you guys tomorrow. Bye bye. Thank you so much for being. And if you haven't joined the Telegram group channel, please just click on this option. This is that option. Click on the more, click on this and join Telegram group. I share all the updates over here, market update, market news, live stream updates as well. What topic are we going to talk about? If you have any suggestions as well, you can talk about those suggestions as well. I will provide those content in the live stream as well. Okay. So